Good evening, everyone, and welcome to something I've done before. In fact, I've done this twice before. Last year, I had a disagreement with Dr. Abby Phillips about one paper, Chandrasekhar 2012. And I did an entire video, a 2-hour long session with Aman Duggal, dissecting Chandrasekhar 2012 and more specifically, avenging Chandrasekhar 2012 and helping everyone, including Dr. Abby Phillips, realize why that was a bloody good paper. Then later last year, we had something similar come up with Ishizuki 91. The Soy Brigade was upset about Ishizuki 91. And they made up lies about Ishizuki 91. They said that the subjects were not given enough iodine. There was no control group apparently. That's what both Chirag and Prabhat claimed. And once again, I had to show up and just communicate simple facts. The subjects were given enough iodine. And there wasn't just one control group. There were 2 control groups. Something anyone with basic reading skills would be able to figure out. You don't need scientific paper reading skills, you just need basic reading skills to figure that out. So, a lot of kindergarten mistakes have been made by first Abby Phillips, then the Soy Brigade, and now it seems like Abby and the Soy Brigade are together, they're working together, they're a team now. But they still keep making mistakes. So tonight, we'll be speaking about one paper which has been subjected to a lot of criticism, not some, a lot of criticism. Because like Ishizuki, Wolick 2013 also upset the Soy Brigade. So they tried their best to discredit Wolick. And we'll examine their attempts at discrediting Wolick. See, at the end of the day, I have no problem with criticism. I have no problem with disagreements. In fact, I encourage debate. I encourage a little competition, a little conflict. These disagreements are good. They're good for the industry. In the absence of strong educational standards and a good barrier to entry, one of the best ways we can identify whether someone is worth listening to or not is by observing their behavior. More specifically, how open they are to disagreement, how open they are to debate, how open they are to their claims being challenged. So, literature, which I shared, it has been challenged, and let's explore the nature of that challenge. Let's explore the criticisms and see if they hold any ground or if they'll share the same fate as the criticisms which were
levied against Ishizuki and Chandrasekhar. Having said that though, there was a debate, and those of you who have joined, I want to know, how many of you have seen that debate? That debate between Tejas and Prabhat. How many of you saw it? I saw it live. Did you see it? The reason I bring up that debate is because Tejas actually did a really good job in that debate. He was very kind, gracious. He let Prabhat speak a lot more than I would have. But in spite of that, he addressed a lot of criticisms which are made against Volek. So I see a lot of you have seen that debate. And I've uploaded a small clip of that debate on my YouTube channel. In fact, you can go ahead right now and watch about 6 minutes of that debate on my YouTube channel. And the reason I uploaded 6 minutes is because the crux of that debate can be found in 6 minutes. See, here's what has happened. Those of you who are familiar with what has transpired since my debate with Chirag to now, you would know that I'm very open to debate, but most of my opponents are not open to debating me. In fact, one of the reels which was made about me, Prabhat had made a reel about me. I dissected that reel, I broke it down. I pointed out the numerous mistakes which Prabhat had made in that reel. And he deleted that reel. If you want to see that reel along with my dissection of that reel, you can look up Debunking the Soy Collab Part 2. That was also the day Prabhat was supposed to debate me. In fact, he sent me a time of 7:30 a.m. in the morning. At 12:30 in the night, he sent me this time. I caught him immediately and I accepted the 7:30 a.m. time slot, and he didn't show up. And I knew he wouldn't show up. So I had backup. I had that reel which I dissected. And after that dissection, he deleted that reel. And apparently that was the most popular reel on his Instagram handle. That reel got about 300 likes or more. But he had to take it down. But anyway, coming back to the debate between Tejas and Prabhat. The reason Tejas and Prabhat had that debate was not because Prabhat challenged Tejas to a debate. It's because Tejas challenged him to a debate after Prabhat started creating reels about him. He doesn't create reels about me. Am I audible? I hope I am. I got a call on WhatsApp, so I hope I'm still audible. If I'm still audible, can you please let me know? Yes, I am audible. Thanks for that, Rhythm. So he doesn't attack me. He doesn't take my name, but he keeps picking on my students. He made a reel about Rishabh, then he made a couple of reels about Tejas. And then he had that debate with Tejas. And anyone who's seen that debate, you know what the outcome of that debate was. Tejas won comfortably. It was an easy win for Tejas. So go and watch that 6 minutes worth of debate video. That has the crux of their disagreement. And Tejas did a fine job of defending Volek 2013.
and helping Prabhat identify that he had made mistakes again. However, since we don't have that entire footage, and since not all the criticisms against Volek were addressed in that debate, I'm here to add a few nails to the coffin. आज करेंगे हम दूध का दूध और पानी का पानी. So, we'll get straight to the point. We'll start with Volek 2013 and more specifically the attacks of the Soy Brigade against Volek 2013. After that, I'll also try and touch on Gooden 2007. But those of you who are watching, I'll share the PubMed IDs with you so that you can pull out these papers and follow along. And you'll get to learn a thing or two as well about scientific paper reading. And if you are a little confused about who is right and who is wrong in this context, pull out the full text and let's go through these criticisms together. Okay, we'll go through these papers together. So first I'll share the PubMed ID for Volek. If you search Volek 2013 on Google, it'll come up, but I'll share the PubMed ID anyway. It's 2401-5719. Again, it's 2401-5719. That's Volek 2013. Gooden 2007. If you search for Gooden soy on Google, you'll get the paper. But again, I'll share the PubMed ID. 1741-6779. Again, that's 1741-6779. That's Gooden 2007. And I'll also share the PubMed IDs of two papers which Tejas referenced. Roth and Hagen. So we'll do Roth first. And he shared these two papers to point out that men and women, the muscle growth potential of men and women isn't different. And in some cases, women end up building a lot more relative muscle as compared to men, and they sometimes build more absolute strength as compared to men as well. So there's this whole idea that men have a greater muscle growth potential than women, and that is largely what one of the criticisms of Volek 2013 rest on. That's what the Soy Brigade pointed out. So they just brought up Roth and Hagen. So I'll share the PubMed IDs for Roth and Hagen as well. For Roth, it is 11890579. Again, that's 11890579. And for Hagen, it's 7558-529. 7558-529. Okay, so now you've got Volek, you've got Gooden, you've got Roth, you've got Hagen, and you've got that clip, which does a reasonable job at summarizing what happened between Tejas and Prabhat. Hopefully you'll get the full footage soon from Tejas or Prabhat, and then you can watch the entire debate. But even if you don't watch the entire debate, if you just watch that clip, that has the crux of their disagreement. Okay, so Ankit has shared the PubMed IDs correctly. You've not shared Gooden's, so I'll add Gooden's to the mix as well. Gooden is 1741-6779. Okay, so pull out Volek now. And I'm going to pull out a graph which is frequently brought up to attack Volek. And let's see what this graph is about, okay? So we'll address their first argument first, and then we'll move forward from here. So this is the graph, okay? And this graph basically shows how much lean body mass the three groups gained.
Okay, so you got the carb group, the whey group, and the soy group. And as you can tell, whey built the most amount of muscle mass, about 3.3 kilograms of muscle mass built by the whey group, followed by the carbohydrate group, which happened to be the placebo group. And they built about 2.3 kilograms of muscle in spite of consuming less protein than whey and soy. And poor old soy is in the end over there. They built about 1.8 kilograms of muscle mass. Now, you can see these circles and these diamonds, right? The diamonds are men and the circles are women. So what the soy brigade claims is that there was a discrepancy between how many men were distributed in the soy group and in the placebo group. There were 11 men in the soy group and 11 women in the soy group. And in the placebo group, the carbohydrate group, there were 13 men and 9 women. So according to the soy brigade, because the carbohydrate group had more men, and because men can build more muscle than women, or their muscle growth potential is greater than women, that is why the results skewed in the favor of the placebo group, and that's why the soy group suffered, because they had more women. So first, let's accept that logic, okay? Let us first begin by granting that argument to the soy group. And let's see this graph again. So if you've seen versions of the graph which are shared by the soy brigade, they point out to these two women in particular. You see these two circles, right? And they say, you see the reason why the soy group only built 1.8 kilograms of muscle is because we had these underperformers. These last 3 women underperformed, and because of the women, we built less muscle mass. Well, let's use that same logic and examine what's happening to the carbohydrate group. Because according to the soy brigade, men have a greater potential to build muscle as compared to women. So the carbohydrate group is benefiting from having more men. But are they really benefiting? Because if you see the carbohydrate group, the 2 worst performers in the carbohydrate group are men, not women. So they always highlight these 2 participants in the soy group. But what about these 2 men? What about those 2 in the carbohydrate group? If according to your logic, men have a greater muscle growth potential than women, then how do you explain the 2 biggest underperformers in the carbohydrate group to be men? How do you explain that? You have to be consistent with your logic. You can't just point out to the soy group's inadequacy. You also have to point out the fact that men did really poorly in the carbohydrate group. So the carbohydrate group actually suffered from having 2 men, according to your logic, not my logic. Having said that though, what the soy brigade doesn't know and they didn't realize is that this discrepancy between men and women, it's not a big discrepancy. It's 11 and 11 for the soy group and 13 and 9 for the carbohydrate group. It's not a big difference. But this big difference does not make a difference anyway, because men and women have the same muscle growth potential, and in some cases, women actually end up building more muscle and more strength than men do. This has been tested.
So naturally the question you may be asking yourself is, then why are men more jacked than women? Why do men have more muscle mass? That's because men start off with more muscle mass. I'll give you a very simple example. Let's say I join the gym and a woman also joins the gym. I start out at 50 kilograms of lean body mass and the woman starts off with 40 kilograms of lean body mass. At the end of 2 years of good nutrition and resistance exercise, we both build 10 kilograms of muscle. Right? Both of us built 10. I started at 50. She started at 40. Now, if both of us built 10, I'm at 60 right now. She's at 50. I'm still bigger than her. But we still built the same amount of muscle mass. That's the reason why men have more muscle mass. And there are also other reasons. There are cultural reasons. Men want to be big and strong, so they train to be big and strong, whereas most women don't want to be big and strong. I said most, I'm not saying all. I know some of you want to be big and strong. Hashtag feminism. But most women do not. They want to be slender and lean and athletic. And this is also a great opportunity to help you understand the difference between an absolute change versus a percentage change or a relative change, because apparently that got brought up in the debate many times. Prabhat kept bringing up absolute, relative. I'll tell you something. He doesn't even understand the difference between absolute and relative. I'm convinced of that. After seeing the full debate, I'm convinced he doesn't understand the difference. But let's use this example to understand what is the difference between absolute and relative. So I started out at 50 kgs of lean body mass. I trained and reached 60. The lady started off at 40 kgs. She trained and she reached 50. Both of us built 10 kilograms of muscle. I went from 50 to 60. She went from 40 to 50. Both of us built 10 kilograms. So the absolute change for both of us is 10 kilograms. That's the absolute difference. However, the percentage change, the relative change, is greater for the lady as opposed to me. So what is this relative change, this percentage change? It's very simple. It's basically the absolute change upon the original number you started out at. So I started out at 50 kgs of lean body mass, and my change in body mass was 10 kgs. I gained 10 kgs. So that's going to be 10 upon 50 multiplied by 100. 1/5 of 100 is 20. So I built about 20% of my lean body mass. Whereas the woman, she also gained 10 kilograms of muscle mass, but she started out at 40. So for her, it's 10 upon 40 into 100. That's 1/4 of 100. That's 25%. She built 25% of lean body mass. I built just 20%. I'll give you an even simpler example to make this very intuitive to understand. Let's say I have 10 rupees and I earn 10 rupees more. Now I have 20. That means I have double what I originally had, right? So I went from 10, now I have 20. So that's a 100% increase because I doubled what I originally had. But let's assume I had 100 rupees and now I have 110 rupees. That's just a 10% increase of my original money because I started out at 100. Okay, so I hope that percentage or relative change versus absolute change is now clear. And I hope that's clear for Prabhat also, because I don't think he understood the difference between relative and absolute change, which was very evident from the debate, because they just pointed out that the absolute
change in muscle mass was the same between men and women. And he kept saying, what about the relative change? The relative change was actually greater for women because the women started out with less muscle mass. So you can check out the studies by Roth and Hagen. There are more studies of this nature as well. If you go on Google Scholar and you just type out the title of Roth and Hagen and you search the citations, you'll find many more papers which will help you realize that men and women don't just build the same amount of muscle, not just the same amount of strength, but sometimes women actually do better than men. They build more strength, and at least one paper pointed out that the rate of muscle protein synthesis is sometimes greater in women as compared to men. Okay, so now that that is taken care of, let's come back to another criticism. And another criticism they had is kind of tied with the last criticism. They say that Volek had a small sample size, and the researchers deliberately added more women to the soy group, and they added more men to the carbohydrate group. And once again, they make a very simple mistake. Honest to goodness, this is a simple mistake. I don't even have to point out the mistake here. For all of you, just read the paper. I'm not even asking you to understand the paper. If you just read the paper and you read how the subjects were distributed and what was the selection criteria when they were sampling the participants, you'll identify the simple mistake they've made. But anyway, we'll point it out. So, the recruitment process of this trial, which was a 9-month trial, by the way, it's one of the best RCTs comparing sources of protein and their associated increases in muscle mass and strength and other body composition parameters which they measured. A 9-month RCT. It's very rare to find a 9-month RCT, and at least to my knowledge, this is the longest RCT which has measured changes in body composition with different sources of protein. So it's a bloody good trial, and one of the ways you know it's a very good study is how meticulous they were in their sampling. They started recruiting subjects for this study somewhere in March 2008. Again, pardon me if I get the dates wrong, but they spent 2 entire years, from March 2008 to January 2010. Volek and his team spent 2 entire years to find the right demographic to study, the right participants for the study. And figure 1 in Volek 2013 illustrates that. So I'll just show you what we have here. And you can pull out figure 1 from Volek. So this is how they started. They actually had 1,200 participants who responded to the recruitment. From 1,200 participants, they narrowed down to 335. From 335, about 166 of them lost interest, and they had 169. And from 169, they lost another 22 participants. So they started off with 147 participants. And these 147 participants were then randomized to the carbohydrate group, which started with 48 participants, the whey group, which started with 49 participants, and the soy group, which started at 50 participants. And they distributed men and women equally between all these 3 groups. Now what ended up happening was, since this was a 9-month trial, from month 0 to month 3, we had some dropouts. So let's take the carbohydrate group, for example. So up until the 3-month point, we had 15 participants drop out. Then from 3 to 6 months, we had 9 participants drop out. And then from 6 months, come on buddies, zoom in. From 6 months to 9 months, we had another 2 participants drop out, and that's why we were left with 22 participants.
And that's why we were left with about 13 men and 9 women. That's how 13 and 9 came to be. And the same happened with the soy group also. It started off with 50. And after all these dropouts over the 9-month period, they were left with 22 participants. And that's how they were left with 11 men and 11 women in the soy group. Simple. You just have to look at a graph, man. You don't even have to read the full paper to identify these simple mistakes. And these people are making you believe that there was some bias. Evil Volek deliberately took 13 men and he put them in the carbohydrate group. And he deliberately had only 9 women in the carbohydrate group. Come on, man. You don't even know how the subjects were randomized to these 3 groups. Now you know why it took me a while to show up live and do this dissection. I'm not very motivated by exposing these simple errors which the soy brigade makes. They're basic mistakes, just like they made basic mistakes with the Ishizuki. These are basic kindergarten mistakes. Okay, so we addressed the criticisms against Volek from a logical perspective first. We accepted their logic, and then we looked at the graph and we pointed out that there were 2 underperformers in the carbohydrate group, and those 2 underperformers were men. So according to your logic, if the carbohydrate group should be benefiting from men, they actually aren't benefiting from men because the men were the underperformers. The 2 men were the underperformers. But again, that's a mistake, because men and women have the same muscle growth potential. So even if the distribution of men and women wasn't equal, Roth and Hagen, and there are numerous other papers which have demonstrated that the strength and muscle growth potential of men and women is the same. So that doesn't make a difference. You also tried to make it appear that there was a sampling bias, which wasn't there. I just helped you identify that. Then Prabhat kept pointing out in his debate with Tejas that this was an 8-week study. Again, kindergarten mistake. Kept saying 8 weeks, 8 weeks. It's a 9-month study, man. And here's the most funny criticism of the launch. The last reel which Prabhat has made about Tejas. Go and have a look at that. The last reel which he made against Tejas. And the only reason he made this reel is because I think he identified that he lost that debate. So he tried to make it appear that Volek has a bias. And it's true. Volek does have a ketogenic bias. And that was his final attempt to discredit Volek. He has a ketogenic bias. He's one of the pioneers of the low carbohydrate movement. And I feel embarrassed even pointing this out right now because this is such a logical fail. If Volek has a low carbohydrate bias, and that is the reason why you're attacking Volek, then why did the carbohydrate group do better than the soy group? It's a bias, right? There's a low carbohydrate bias. So using your low carbohydrate bias logic, the carbohydrate group should be the worst performers. And this is not new. In his reel, he said he found this out from Google Scholar. No, he didn't.
He learned this from my debate 3 months ago with Sukhpreet Singh, a good gentleman. I have a lot of respect for Sukhpreet Singh. We started off on a feisty note. There was a lot of back and forth. But honest to goodness, Sukhpreet Singh is a true scientist, a true PhD scholar. Because in the face of evidence, he disagreed with me. But after I helped him understand where I'm coming from, he changed his stance. And that's what we need to see more of. And hand on my heart, I'll be honest with you. If you can legitimately help me identify that soy is safe to consume, I'll also change my stance. That is how scientific thinking works. But if you keep making these childish mistakes, it's only going to make you look bad. So, this is from 3 months ago. I'll play this video for you. This is after Tejas joined me, after my debate with Sukhpreet Singh. So you can check this out. It's Does Soy Decrease Testosterone in Men? Aman Duggal debates Sukhpreet Singh, Dr. Sukhpreet Singh. Just Let me know if you can hear. Tejas has collected some data. Once you mentioned the Kramer study and the Volek study is especially good. You see a greater benefit of carbohydrate intake, and that study you can shove it in the face of people who are like, यार प्रोटीन कहाँ से ले फिर प्रोटीन इंटेक मीट नहीं हो रहा है नहीं मीट हो रहा है अच्छा है मत मीट करो ठीक है अगर सोय से ही लेना है तो मीट मत करो बेटर रिजल्ट आ रहे हैं देख लो. That is true. That's a study which really upsets the soy brigade. And I'll tell you something. It even upset Jeff Volek. Jeff Volek is one of the pioneers of the low-carb movement. He is trying to make a case against carbohydrate intake. He doesn't have a problem with soy or whey. He just has a problem with carbs. So I think he put that placebo group in there just to perhaps see some negative effects of carbohydrate supplementation in the placebo. So then he could maybe add a comment or two. And the carbohydrate group consuming lesser protein did better than the soy group. That's an epic paper. Yeah. I will make a video on that paper. That paper is too epic. Yeah. Okay. So this is something I brought up. I brought up Jeff Volek's low carbohydrate bias. And if anything, Jeff Volek's low carbohydrate bias is a strength of our arguments against soy. Because if Jeff Volek did have a low carbohydrate bias and that low carbohydrate bias colored the results of this paper, and in spite of that, the carbohydrate group still did better than the soy group. That's a bigger win for our case against soy. Simple logical mistakes which you make, and unfortunately the state of Instagram is such that a lot of people aren't able to identify these mistakes, which is why I have to come up and point them out. But anyway, now let's come to the reels which Prabhat has made. So I spoke to you about the one reel he made about me, which he deleted, because you can ask him why he deleted it. And if you want to know why he deleted it, go watch Debunking the Soy Collab Part 2. I think it's titled Prabhat's Cowardice. Then he deleted another reel about Tejas. He made a reel, then he deleted it, and then he lied. And this is another reason why you can't take the soy brigade seriously, because they end up lying. I've caught Prabhat lying so many times. Forget lying, man. He backed out of debating me 7 times. He could have shown up today also, right? He's online. He's watching from another account. He could have shown up today also. But he won't show up. So 7 times he backed out from debating me. And he deleted Tejas' reel because of the words which he selected. I think Prabhat is jealous of Tejas.
In fact, I don't think this, I know this. So here's the thing with Tejas. Tejas and Prabhat are about the same age. And Tejas is doing a lot better than Prabhat. It's for everyone to see. Both in terms of influence and authority. He's reached another level altogether. An aggressive climb to the top on Instagram. And he's doing so many beautiful things. He's lecturing at university in Mumbai, at multiple universities in Mumbai. And let me tell you something. Don't just look at him as an influencer. He knows his stuff. He's very good at both nutrition and exercise. Very technically proficient. Just like Kashish is very technically proficient. So one of the things I have really liked about Tejas and Kashish's climb to the top is the fact that they've reached the top by virtue of sharing good information, quality information. That's very rare to see, that combination of influence and authority. So credit goes to them. And Prabhat kept attacking Tejas and kept saying, Tejas has made a mistake, go bash him. And then later he must have realized that he's coming across as childish. So he deleted that reel. Now to justify how that reel got deleted, he lied about the fact that Tejas deleted that reel. How will Tejas delete it? Please tell me. How can Tejas delete the reel? You made a remix with his reel. His original reel is still there. And you made another remix. Show me evidence that they just deleted that reel. Liar. झूठ बोलते हो, वो भी सबके सामने खुला खुला झूठ बोलते हो, और तुमको लगता है हम पकड़ेंगे नहीं तुम्हारा झूठ. In fact, I'll tell you something. Do this. Prabhat, if you're watching, upload that original reel again. We want that original reel on your Instagram, and you'll find out why soon. The reason you deleted that reel was because of your choice of words. And realizing that those choice of words could land you in legal trouble. Go and bash this guy. Kaun hai re tu? Go and bash this guy. Biochemistry, apparently. So anyway, that's the extent of Volek 2013. Now, we got about 15 minutes remaining. I'll quickly touch on Gooden 2007. That is so kind of you, but I'll say there is a lot of things to learn from you, and I'll still try to learn from you. Thank you for that, Kashish. It's good to see you live too. Okay, very quickly. We'll do Gooden 2007. Very quickly. Gooden is 1741679. And in fact, I shouldn't even be doing Gooden right now, because Prabhat hasn't made a reel on Gooden. Chirag hasn't said anything about Gooden on his Twitter. So we'll wait for them to make a mistake and then point out their mistakes. But anyway, let's touch on Gooden also. All right. So in his debate with Tejas, after realizing he cannot defend his attacks against Volek, Prabhat quickly went to Gooden, and again he brought up another graph, because all they can do is look at graphs, right? You can't really read the paper. So whatever the graph shows is what catches your eye and catches that small soy-fueled brain of yours. So this is from Gooden, okay? So again, if you pull it out, and Prabhat's criticisms are about this particular subject.
SP2. SP2 who started out at a baseline testosterone level of almost double, or I think more than double, of the other participants. And according to him, that made SP2 an outlier. And because he's an outlier, his results then skewed the results of the overall outcome, and that is the reason why soy once again did poorly, and that is the reason why Gooden concluded that soy decreases testosterone. And firstly, I find it strange that you keep bringing up absolute and relative. Absolute changes and percentage changes. And you don't apply that logic to Gooden 2007. I'll tell you why. We just learned what a percentage changes or relative changes, right? And one of the things you must have identified is that what goes in the denominator, the original value goes in the denominator. So where you start out from goes in the denominator. The change is in the numerator. So if a participant started at a very high testosterone level, more than double of the other participants, what will the percentage change be? Because that very high testosterone level will go in the denominator. And when it goes in the denominator, that's going to yield a smaller percentage change for that same drop in testosterone. And that is what Gooden showed. Gooden measured percentage changes. And if you were a little thorough with your analysis, with your dissection, you would have realized that as far as the percentage drop is concerned, SP2 did not have the biggest percentage drop. SP2 was fourth out of the 12 subjects they analyzed for the percentage drop in testosterone. So you apply your absolute and relative thinking where it is convenient, and you discard it when it's not convenient. That's point number one. Point number two will be a little difficult to understand for you, because I don't think you're well educated in statistics. If you pull out Gooden, there's a small section which reveals what statistical testing they use to analyze these changes in testosterone. They used something known as the Wilcoxon signed rank test. And there's a reason they use the Wilcoxon signed rank test. And in order for you to understand what this particular test is, focus on the keyword rank. Rank-based tests are used in statistics when the data isn't normally distributed, and when there is a potential outlier and you want to minimize the effect of a potential outlier. The keyword here is potential outlier. So the way you want to think about rank-based tests is that it doesn't really matter what the difference between the starting point of an extreme case was compared to the next extreme case. So let's say SP2 started off at a very high testosterone level, and the next highest was, I can't remember off the top of my head, but let's say it was SP3, and his starting levels were half of SP2's. What rank-based testing does is,
it does not care about the magnitude of difference between SP2 and SP3. It just ranks the participants. So SP2 will be ranked 1, SP3 will be ranked 2, and so on and so forth. So this form of testing is very robust to outliers. In fact, this is probably why Gooden used the Wilcoxon sign rank test to rule out the effect of one particular subject, or maybe other subjects, their ability to influence the final outcome. And graphs are deceptive. The scale of the graph often makes it appear that there is an outlier or there isn't an outlier. But regardless of whether or not SP2 started off at a very high baseline level of testosterone, which I will agree, the Wilcoxon sign rank test was used exactly for this reason. And that aside, percentage change wise, SP2 did not have the greatest percentage change, and that is what was compared at the end of the day. So this deficit in statistical thinking I've not just identified with Prabhat, I've identified this with Abby Phillips also. Even he struggles with statistics. Case in point, one of his criticisms against Chandrasekhar was that there was a small sample size. And this is statistics 101. If there is a small sample size and you still see a statistically significant difference at the end of the intervention in spite of a small sample size, that means you have to take the study very seriously and the results very seriously. Because it's easier to reach statistical significance with a larger sample size. So it's easier to detect a small effect size when you have a large sample size. But if you have a small sample size and you still see a statistically significant difference, that means the size of the effect size was large. That is why we had a statistically significant difference. And that is one of the reasons why you should take studies with a small sample size seriously, especially if they are still able to communicate a statistically significant difference in spite of their small sample size. But again, this is statistics 101, and I don't expect Abby Phillips and his friends, especially the Soy Brigade, to understand simple statistics. So that was the Gooden study. And we got about 6 minutes remaining. I actually want to play that video. In fact, go and watch that video. I won't play that video because I'll bring this live session to an end. It's going to end anyway after 6 minutes. Watch that clip which I've uploaded. After Tejas cornered Prabhat with Roth and Hagen, Prabhat kept saying, right, show me the evidence, show me the evidence. Tejas showed him the evidence. Then Prabhat said, I have 100 other research papers which prove me right and will prove you wrong. He didn't show even one. He said 100. He didn't even show one. And then, after Tejas cornered him, you know what he said? And it's on video. You can go watch it. Evidence को छोड़ो. Evidence रहने देते. Audience के साथ बात करते. Audience थोड़ी ना पढ़ेगी evidence. हाँ प्रभात बहुत एविडेंस करता है, और जब एविडेंस तेरे फेवर में नहीं निकलता है तो फिर तू बोलता है एविडेंस को छोड़ो. ऑडियंस के लेवल पे बात करते हैं. ये है आपके इन्फ्लुएंसर के डबल स्टैंडर्ड्स. और मैं इन्फ्लुएंसर क्यों बोल रहा हूं? ये जो प्रभात है ये टीचर है तुम्हारे
सॉय वाले इन्फ्लुएंसर्स का। ये कबीर, चिराग, चौकसी, नचिकेत, इन सबको यही सिखाते हैं। For Chirag and Kabir, I at least have some sympathy for them. ये प्रभात तो सुधरेगा नहीं, ये तो अपना मुंह काला करता रहेगा. But I have some advice for Chirag and Kabir. Put a leash on this guy. Put a collar on him. And tell him to behave himself. Because every time he comes and he says something and he makes stupid mistakes, you know who looks bad? It's not he who looks bad. Everyone knows he's a dummy. And he doesn't have much in the way of influence also. With Chirag, you're a big company owner. And Kabir has 100K followers on Instagram. People look up to you, man. To both of you. Both of you look bad. Because you learn from dummies like Prabhat. इसका तो फ्यूचर डार्क है, पर इसके फ्यूचर के साथ आपका भी फ्यूचर डार्क करेगा. तुमको सोया चंक्स को डिफेंड करना है ना, थोड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट लेके आओ ना. किसी अच्छे टीचर को लेके आओ, उसको लेके आओ ना, वो आबी बिटरमैन को. वो भी भाग गया. मैंने उसका डिबेट चैलेंज जब एक्सेप्ट किया ना, वो भी भाग गया. वीगन गेन्स को लेके आओ. किसी गोरे को पकड़ो और उसको बुलाओ. examine.com के किसी रिसर्चर को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी वही होप है ना कि गोरों ने सोया को सपोर्ट दिया है, तो शायद उन्होंने सोच समझ के सोया को सपोर्ट दिया होगा. यही बात तुम्हारे मन में है ना. एक दिन कोई आएगा, एलन आरागोन आएगा, मार्टिन मैकडोनाल्ड आएगा, लेन नॉर्टन आएगा और अमन दुग्गल को चुप करेगा. तो लाओ ना उनको, क्योंकि एविडेंस तो तुम्हारे पास नहीं है. And in spite of overwhelming evidence against the consumption of soy, you still promote it. You still prescribe it. तुम कचरा साफ करोगे, तुम ही इंडस्ट्री को सही दिशा में लेके जाओगे. Take a look in the mirror. And it seems like we don't have that 1 hour time limit anymore. So, I'll spend about 5 minutes. If you have any more questions, or rather, if you have any questions, I've missed most of your comments, please let me know. I'll be happy to address them. And that's it. It's embarrassing right now. Every time I have to show up live and do these dissections. Actually, you know what? Since I'm going to save this video and upload it on YouTube, let's play this video. Watch this. Yeah. Okay, watch this. Tejas schools Prabhat. I hope Tejas uploads the full debate so that you can see it. Which university in India is good for masters in sports science? The Aman Duggal University. Go and watch this video, and I'm going to go grab some food, and then I'm going to train. And soy boys,
listen to me and listen carefully. Till I am practicing in this industry, you'll never be right. Because you do not have the capability of being right. I'm actually familiar with the arguments in support of soy. Back in the day, me and my vegan friends, one of them has a PhD in biochemistry, the other one has a PhD in molecular biology. We actually put together a really strong case for consuming soy. That was all the way back in 2015. And so far, none of you have even come close to making a good case for soy. You should be ashamed of yourselves, all of you. That's why I make fun of the evidence-based movement. ये जो evidence-based, science-based करते रहते हैं लोग, कोई भी इनमें से science-based नहीं है, कोई भी इनमें से evidence-based नहीं है. पता है क्या है ये लोग? Hope-based. सुनो फिर से, hope-based. We are hoping that we are on the side of the science. We are hoping that we are on the side of the evidence because we do not think we have some Gora from America or Europe or examine.com who thinks for us. And we are hoping that Gora is right. We are hoping that Mark Messina is right. ये पूरा जो न्यू एज इंटरनेट पे साइंस बेस्ड मूवमेंट है ना, एक बड़ा स्कैम है. किसी को नहीं आता इधर साइंस, और मैं बताता हूं क्यों नहीं आता है. कि साइंस आसान नहीं है, मेहनत लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है. और आज के ज़माने में मेहनत और पढ़ाई के दम पे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं. सोशल मीडिया पे रील और नौटंकी करने के दम पे लोग आगे बढ़ते हैं. I'm going to come live again tomorrow. Now that we are done with the soy shenanigans, I'll be live tomorrow. And I'm going to grab two men by the collar. One Indian and one Gora. एक गोरे को पकड़ने वाला हूं मैं कॉलर से, और उसका एग्जाम्पल बनाने वाला हूं मैं. तुम बहुत चाहते हो गोरे को, पर जब तक इन लोगों का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, जब तक इन लोगों को बम्बू नहीं मिलेगा, तब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे. So, enough of this
back and forth in baby man Indian soy-based community. You offer no challenge whatsoever. You're children, you're weak, you're useless. It's time to pick on your heroes. It's time to pick up from where I left off in 2021. Someone already knows who I'm going to pick on. But for the rest of you, I have a simple question. Who's next? I'll keep coming about and keep slapping these soy boys around. They're easy. इनकी नौटंकी चलती रहेगी. But take a guess. Tomorrow, you will find out who is going to be at the receiving end of the most dangerous bamboo stick in the fitness industry. Sweet dreams, everyone. And to the soy boys, keep eating your soy. That's what you deserve. Out. Good evening, everyone. And the moment that all of you have been patiently waiting for close to a year now, has finally arrived. Our friend Prabhat has finally mustered up some courage, and he's showing up today. And he definitely is showing up because he sent me a request. So let's add Prabhat. Hi, can you hear me? Am I audible? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक. अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, बताइए क्या हाल है, कैसे हो? एकदम एकदम बढ़िया. Many congratulations to you. You finally made it. Yeah. Okay, let's start the debate. बताओ आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो? करते हैं वहां से. Oh, you want to shift the ball to my court? No problem. I'll begin the आप debate. बताओ तो मैं भी स्टार्ट कर दूंगा. I don't have any problem. No, I'd like to begin. I'll tell you why I'd like to begin. नहीं मैं टॉपिक पर ही रहते हैं, सो ही स्टार्ट करते हैं ना. हाँ, स्टार्ट कर. सोए पे ही बात कर रहे हैं. मैंने बोला आपको. करो. मेरे को लगता है तो जल्दी करो यार, और भी काम होता है, जल्दी करो. क्या काम है आपको? अगेन आई टोल्ड यू कि स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट कर रहे हो. ओके आई एम इंटरप्ट. ओके लेट्स स्टार्ट देन. Okay. So I'm going to speak now and I'm going to stick to the topic.
You may think that I'm deviating away from the topic, but I'll stick to the नहीं topic. आप And ना I सी expect you not to interrupt. Okay? दुग्गल जी All right, I'm दो लाइन में starting. आपके देखो, स्टैंड को हम 2 लाइन में खत्म देखो, कर आप बोल रहे हैं कि मैं आप इंटरप्ट नहीं करूं, आप 2 लाइन में खत्म कर दो अपनी बात, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको खत्म कर दो। देखो, मैं शुरू करूंगा। मेरे को 2 लाइन लगे, ओके 3 लाइन लगे, 4 लाइन ओके लगे, वो मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। ये छोटा टॉपिक है क्या? बताओ मेरे को। नहीं नहीं इसको सोयाबीन पे जो हाँ डिबेट है 2 लाइन में खत्म होगा आई विल क्या? बताओ मेरे आई को। विल डू इट दो, आई विल डू इट तो करो, आप करो 2 लाइन में। चलो आप शुरू करो, देखते हैं 2 लाइन में आई कैसे सेड शुरू यू करो। कि करो, आपका स्टांस क्या है। करो ना 2 लाइन, 2 लाइन में शुरू करो ना। दिखा, अरे नहीं देखते हैं। इडियट जो आपको बकवास दो कर लाइन रहा में आते हैं, ओके 2 लाइन में लेट्स आते स्टार्ट हैं। देन ए सुन 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 लेट्स सुन स्टार्ट सुन सुन, तेरे को इडियट मैंने नहीं बुलाया। सुन, लेट्स स्टार्ट तू लेट्स बात स्टार्ट करेगा ना तो तमीज से बात कर, अच्छा बदतमीजी मत कर, इधर फालतूगिरी लिसन मत कर। यू सेड टू मी रील्स पे फर्स्ट बहुत फालतूगिरी की है। लिसन क्या बोला तेरे को मैंने? लिसन क्या बोला तेरे को? इडियट बुलाया क्या मैंने? इडियट बुलाया क्या तेरे को? यू नेवर सेड दैट फालतू, दिखाऊं मैं दिखाऊं तेरे को इडियट बुलाया मैंने? दिखाऊं मैं तेरे को यू अभी सेड मैंने मी इडियट बुलाया कौड़ी क्या? का 2 कौड़ी तेरे का को बोला था कि नहीं आपने मैंने आपने इडियट मुझे बुलाया क्या अभी? मैं दिखाऊं तेरे को चैट डिबेट करना है तो चैट तमीज से दिखाऊं डिबेट कर। बिल्कुल आपको भी बदतमीजी करेगा तो अगर अभी निकाल आपको दूंगा भी तेरे को, आपको अभी भी तेरे को अगर निकाल डिबेट दूंगा। करना है अबे अबे यार सुन, जब डिबेट का मन नहीं होता सुन, तो मत करा करो दैट्स व्हाट आई एम फालतूगिरी सेइंग मत कर, निकल लिसन जा यहाँ लिसन से। भग, आपने मुझे मैसेज पे भग, बोला है आपने निकल मुझे जा मैसेज पे बोला ना। 2 कौड़ी का बोला कि नहीं। अब मैं अगर बदतमीजी नहीं करूँ तो दो कौन करेगा। कौड़ी का और हो, अगर 3 इडियट कौड़ी हो का हो, आप मैसेज अगर पे, आप इडियट मैसेज लिसन मैं मैसेज लाइव पे बोलता हूँ फालतूगिरी जो बोलता करेगा हूँ तो मैं फालतूगिरी लाइव में, बोलता हूँ नहीं फालतूगिरी नहीं करा मैसेज मैंने पे कुछ फालतूगिरी आप करेगा दिखाओ मैंने तो कब आपको बम्बू खाएगा। गाली दिया मैंने कब अभी आपको उल्टा बोला क्या? अभी आई अभी सेड डिबेट में यू शुरू आर कर रहा था ना। हाँ जी करो तेरे करो को मैंने इडियट बुलाया क्या? लिसन यू तेरे को सेड मैंने फट्टू बुलाया क्या? अभी मैं दिखाऊं चल, क्या इधर तेरे को इडियट की बात करनी है ना, चल मैं ओके ये भी प्रूव कर देता हूँ ये डिबेट में कि तू एक्चुअली एक इडियट है। ठीक है प्रूव करूँ क्या? मैं करो ये करो मैं चालू करता हूँ और मैं प्रूव टॉपिक पे करता हूँ कि तू रहना एक्चुअली एक टॉपिक इडियट है। ठीक है टॉपिक टॉपिक भी, पे हाँ अभी हाँ टॉपिक किस पे जी जी चालू जी हुआ? इडियट पे चालू सोए हुआ ना। सोए सोए मैं पे अभी प्रूव करके लिसन बताता लिसन हूँ कि तू एक आपको इडियट है। सोए की बात आप घुमा रहे हो मैं बात को सोए यू पे आर चालू एन कर रहा इडियट था, लिसन करो ना मैं फिर कर सोए रहा पे था चालू कर रहा था। तो तूने करो इडियट, तूने फालतूगिरी काय को की? इडियट इडियट काय को कर रहे? लिसन यू सेड मी फूल यू सेड देख, मी 2 कौड़ी का एंड यू आर देख, सेइंग टू मी देख, ते कोई डिबेट करना है ना तो तमीज से बात कर। ओके ओके नहीं आते तमीज से चलो बात करना तो चलो निकल जा, जा आपको भी हॉस्पिटल मैं जा। बोलता हूँ आपको भी मैं बोलता हूँ तमीज से बात मैंने करना तेरे अपनी को बात इडियट बुलाया? नहीं बुलाया मैंने तेरे को इडियट बुलाया? हैव यू नेवर सेड तेरे टू को मी इडियट फूल बुलाया? हैव यू नेवर तेरे सेड को टू मैंने मी अभी फूल इडियट बुलाया? अभी नहीं देख, कभी कभी बोला था कि नहीं बोला था हाँ या ना तो मैंने जब तेरे को बोला था तो मैंने तेरे को रीजन दिया था कि नहीं? रीजन तेरे को रीजन दिया आई था विल ना। शो यू देख, व्हाट इज द रीजन तेरे फॉर में यू और मेरे में, तेरे में और मेरे में मैं तेरे को बताता हूँ डिफरेंस क्या है। जब कौन मैंने सा तेरे को बात इडियट करते हैं बुलाया था ना, सुनना सुनना, जब हम्म मैंने तेरे को इडियट बुलाया था ना, मैंने रीजन दिया था। उस ओके दिन तू एक्चुअली इडियोटिक काम कर रहा था, इसलिए मैंने तेरे को इडियट बुलाया। ओके जब मैं तेरे को फूल बुलाता हूँ ना, तो एक्चुअली फूलिश काम करता है, इसलिए ठीक मैं तेरे को फूल बुलाता हूँ। ओके मैं फालतू का गाली नहीं देता हूँ, फालतू का मजाक नहीं उड़ाता हूँ। ठीक है जब तू मजाक करने वाली हरकतें करता है ना, तब मैं जी तेरा मजाक उड़ाता हूँ। ओके ठीक है, तो इडियोटिक काम तू कर रहे है। तेरे लास्ट के 3 रील देख 100 पे। तेजस के बारे में झूठ क्यों बोला? क्यों बोला कि उसने वीडियो डिलीट किया है? प्रूफ कर सकता है तू? अभी मैं तेरे को अभी प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ आपको कि तू, मैं आपको करता हाँ हूँ कर ओके कर कर, चल देखते देखते अभी कौन इडियट है। okay see this thing I shared the reel okay at 3 a.m. right you know this thing as far as I पॉइंट know पे आ, तेजस ने कहा डिलीट की रील Okay. तेरी, प्रूफ कर। जी इडियट मत बन, प्रूफ नहीं कर, मैंने तो स्टोरी पर भी डाला था दिखा, एविडेंस दिखा। एविडेंस दिखाता हूँ ये लो आपके एविडेंस व्हाट इज दिस क्या है? What is this? This content may पीछे have पीछे been deleted by its owner or hidden by their वो privacy वो रुक setting. You रुक, may वो be वो able. वो तेजस का नाम किधर है? उधर तेजस का नाम किधर है? Listen, this is तेजस का नाम किधर है? please. Are you an idiot? अरे भाई एक बात बताओ वो जब हम मैसेज के delete ऊपर लिखा है अवेंजर्स असेंबल। हाँ तेजस का नाम किधर है उधर? यार वो हाउ कैन यू मैं शो तेजस के दैट साथ तेजस डिलीट दैट?
You said that Tejas deleted the reel. आई शेयर द रील एंड वो रील डिलीट हुआ, उस पे तेजस का नाम नहीं आता, आपको वो इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता शायद, मैं बता दूं आपको, राइट? तो अगर तेजस का नाम नहीं आता है फिर तूने कैसे अज्यूम किया कि तेजस ने डिलीट की रील? वो बताओ, रील तूने because डिलीट की, इसमें झूठ लिखा मत हुआ बोल। है। क्या लिखे है तेरे रील के साथ? क्या लिखे है? वो मैसेज में मेरे को दिखा कि वेयर इज, शो मी टू थिंग्स, वन शो मी तेजस नेम, Okay. एंड सेकेंडली शो मी हाउ दैट मैसेज इज एसोसिएटेड विद द रील व्हिच गॉट Okay. डिलीटेड। वीडियो मैंने कब डाला था? कैन यू टेल मी द टाइम? Show me two things. Where is Tejas's name written? And I'm how telling is you, that message आपको associated पता है- with the reel which you आपको deleted? पता है कि नहीं मैंने रील कब डाला है? 3:00 तूने क्या बोला बे? AM, बात 3:00 मत घुमा, फालतू बात मत कर, सीधी सीधी सीधा सीधा सवाल तेरे को अच्छा। पूछा है। अच्छा। उसमें कहाँ लिखा है कि तेरी रील डिलीट हुई है जो तूने तेजस पे बनाई? दिखा मेरे को, I प्रूफ said कर, this. फिर से दिखाओ मैसेज, देखो दिखा फिर से। देखो हाँ, दिस आराम से, थोड़ा पीछे ले। और टाइम भी Avengers शेयर कर दो। 23rd April 3:17 AM. This content may have been deleted by its owner or hidden their privacy settings. You may be able to view it on Facebook. इसमें कहाँ लिखा है कि तेरा जो कंटेंट है बिकॉज वो डिलीट हुआ है? पे मैं आपको दिखा देता हूँ और प्रूफ दिखाता हूँ। एक बंदा है, आई थिंक हिज नेम इज हार्दिक, उन्होंने बिकॉज द थिंग इज उनका मुझे खुद मैसेज आया कि ये कैसे डिलीट हुआ, देन आई री अपलोडेड इट और वो सुबह सुबह तेजस ने डिलीट कर दिया। ओके Liar, you deleted Okay. it. You have no evidence. ओके, You क्या वो deleted सेम it. रील अपलोड है अभी मेरे प्रोफाइल पे? नहीं है, नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तूने डिलीट किया। तो आप वो दिखा सेम दो रील क्या अपलोडेड नहीं है। तो आप रील दिखा दो। मैंने तेजस को ही बोला, अगर चलो बाय चांस मैं 2 सेकंड के वो- लिए मान रहा हूँ, मैं 2 सेकंड के लिए मान रहा हूँ कि मैंने वो डिलीट करा है, खुद करा है, अगर मैं मान रहा हूँ तो चलो ठीक है। अगर मैं मान भी रहा हूँ, सही आई एम सेइंग, तो आप मुझे प्रूव कर दो कि वो रील मैंने दोबारा अपलोड की है कि नहीं। नहीं किया। तो दिखाओ ना। मैं पता है कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। बिल्कुल, अरे सुनना, मैं अभी प्रूफ तो करता करो हूँ। ना, मैं देख रहा हूँ, कर सकता मैं कर रहा हूँ ना। चुप बैठेगा तो मैं प्रूफ करूंगा ना। Okay. बत्तीसी मत दिखा, Okay. चुप बैठ, ओके चुप बैठ, गुड बॉय की तरह सुन। जी। तूने जब नई रील अपलोड की, तूने उसमें क्या बोला? आई अर्ज तेजस नॉट टू टेक दिस रील डाउन अगेन। Okay. और जो तूने वर्डिंग यूज किया वो रील में, हाँ। वो तेरे पहले रील से अलग थी। तूने हाँ। एक और नया वीडियो रिकॉर्ड किया। हाँ, तूने ओरिजिनल रील नहीं डाली, ठीक है? दैट वाज अ रीमिक्स। ओके, रीमिक्स सेव नहीं होता है, यू शुड नो दैट। तो मैं उसे record बात करके नहीं बहुत बैठूंगा। सिंपल है, सिंपल है। बात बहुत सिंपल है। जब तूने वो नई रील पोस्ट की, तूने बोला कि तेजस ने वो रील डिलीट की। हाँ जी बिल्कुल। अभी तक दोबारा तूने मैंने एक re-upload भी एविडेंस नहीं दिखाया है। तूने बोला ना तेरा कोई तो दोस्त है, हार्दिक वार्दिक, जी, क्या जी, बोल जी। रहा था उसके बारे में, बता। ओके, लिसन टू मी, सी 3:02 आई थिंक 2 मिनट पे मुझे मैंने वो रील अपलोड की। ओके, देयर वाज अ टर्म रिलेटिव एंड प्रूफ दिखा, जी। ओके, प्रूफ दिखा। 3:02 पे रील तूने Okay. अपलोड की। यार यही बात घुमाने के लिए अगर आप लोग डिबेट करना होता है ना, then अरे भाई तू दिखा ना, फालतू बात मत Okay. कर, दिखा चल। तेजस सिंह 23 अप्रैल 2:56 AM, भाई तेजस वाली वीडियो देख रहा था, कहाँ गई? अपलोडेड अगेन, कब? 2:58 AM। ओके, तू तेरे दोस्त की चैट दिखा रहा है। तूने ये नहीं दिखाया है कि तू जो भी है तेरा दोस्त है, दुश्मन है, तू चैट दिखा रहा है। मैंने तेरे को ऑब्जेक्टिव एविडेंस मांगा है, मेरे को ये दिखा तूने रील कितने बजे। अभी तूने बोला कि तूने 3:17 पे अपलोड किया, अभी तू किसी का चैट दिखा रहा है 2:58 AM का। सही, ओरिजिनल मुझे बोलने तो रील दो कितने यार। बजे अपलोड की तूने? ओरिजिनल रील कितने बजे अपलोड की तूने? 3 रील डली है। डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? 3 रील मैं तेजस की रील, जो पहली रील तूने डिलीट हाँ जी। की, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को ये दिखा हाँ। कि तूने वो रील 3:17 पे अपलोड हाँ। की, और मेरे को ये दिखा कि तेजस ने वो रील डिलीट करवाई, और कैसे। मैं भी वही बता रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार दिखा दिया है। मैंने वो ग्रुप पे अपने तूने share करा, फालतू okay? चैट दिखाया है, कुछ क्या? दिखाया नहीं है तूने।
मैंने 3:17 पे एक रील शेयर तू किया, वो डिलीट हो गई। अवेंजर्स का चैट दिखा रहा है, कुछ भी फालतूगिरी दिखा रहा है, कोई भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, कहीं पे भी वहां पे लिखा नहीं है कि तेरी रील, योर स्पेसिफिक रील अगेंस्ट तेजस वाज डिलीटेड. That message does not point to Tejas' reel, number one, and number two, it by no means shows that Tejas got that reel deleted. जब So you're delete lying. होता है, जब डिलीट होता है तो उधर तेजस का नाम नहीं आता, वो इंस्टाग्राम वीडियो डिलीट होती है। यू शुड नो तो दैट। फिर तू झूठ आपको इंस्टाग्राम तो फिर तू झूठ काहे को बोलता है? फालतू बात क्यों बोलता है? आपको नहीं अगर पता तेजस का Instagram नाम नहीं कैसे आया, चलाना है? अगर तेजस का नाम नहीं आया, फिर तूने कैसे अज्यूम किया? वो इंस्टाग्राम की तो फिर गलती तूने है, मेरी assume नहीं है वो। आई एम नॉट। तो फिर तू बोलना इंस्टाग्राम ने डिलीट की। तेजस ने कैसे डिलीट की? तेजस ने कैसे डिलीट की? लिसन, तेजस ही वो रिमिक्स पे कंट्रोल करते हैं। आपको ये बात पता होगी, जब कोई बंदा रिमिक्स करता है तो तेजस के पास कंट्रोल है कि वो डिलीट कर सकते हैं नहीं। और ये इंस्टाग्राम ने 3:17 पे जो दिखाया है, तेरे पास कोई प्रूफ है कि तेजस ने रील डिलीट दिखाऊंगा? करवाई? और क्या एक proof और चीज दिखा मेरे को, हाँ। मेरे को एक और चीज दिखा, मेरे को ये भी दिखा कि इंस्टाग्राम ने वो रील डिलीट करवाई। तेरे को नोटिफिकेशन कहाँ पे आया दैट योर रील एक्चुअली गॉट डिलीटेड? बिकॉज आई डोंट इवन बिलीव दैट योर रील गॉट डिलीटेड। नोटिफिकेशन नहीं आता कभी भी। अगर रील तो डिलीट फिर होता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता। तो तेरी रील गायब होगी बस ऐसे। आइयो नहीं, तू उठा, रील गायब होगी। मैंने दोबारा डाल दिया भाई, दोबारा अबे डाल दिया देख, same चीज। तमीज से बात कर, आप भी तमीज से बात कर। की। मैंने तमीज तेरे से को बात। पूछा, देख सुन, मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि तू इडियट है। अच्छा। तो अभी इडियट वाली बातें कर रहा है और फिर तू मेरे को इडियट बुला रहा है। तू मेरे को ये प्रूफ करके दिखा ना कि सबसे पहले दो चीजें दिखा कि तेरी रील डिलीट हुई, उसका तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरी चीज की तेजस ने डिलीट करवाई। कुछ नहीं, तू चैट दिखा रहा है फालतू का। ये तो वीडियो मैं सेव और हो बात दिखाऊं? क्या? नहीं, मैं देखो बताता वीडियो हूँ, सेव नहीं ये होता, जो आपको डिबेट पता है ना, होगा। नहीं मैं ये वाला वीडियो, ये लाइव वीडियो मैंने तेरे को क्यों बुलाया आज, क्योंकि मैं ये डिबेट सेव करने वाला हूँ। हाँ, करो, ठीक है, बिल्कुल करो। तो इमोर्टलाइज होने वाला है यूट्यूब पे, बिल्कुल। और लोगों को दिखेगा कि इडियट कौन है और झूठ Okay. कौन बोलता है। ठीक है। मैंने तेरे को पहले भी पकड़ा है झूठ बोलते ठीक हुए। है, ठीक है, ठीक है। फालतूगिरी मत बिल्कुल। हाँ जी, कर। बिल्कुल। तेजस के साथ कर सकता Okay. है, बाकी लोगों के साथ कर सकता है, अपने Okay. फॉलोअर्स को घुमा सकता है, Okay. मेरे को नहीं कर सकता ये। Okay. ठीक है, तो है तेरे पास कोई प्रूफ कि तेजस ने डिलीट करवाई रील? यार मैंने आपको अभी चैट दिखाया कि वो शेयर मैंने रील करा, अब वो रील डिलीट हो गया तो वो रील क्लियरली दिखाता है कि ये ओनर, जो कि रिमिक्स का ओनर है, राइट? रिमिक्स का ओनर तेजस है, तेजस ने डिलीट करा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं आपकी तरह स्क्रीनशॉट लेके नहीं बैठा रहता। अच्छा, कि चल मैंने ये डाला, वो डाला। चल, चलो मान लेते हैं हाँ। कि वो तेरे को मैसेज आया। अच्छा, मैसेज ये तो आया दिखा नहीं, दे कि तेरे वो को रात होता है, वो नहीं, होता ही है। तेरे को आया ना, तूने आया। किसी को दिखाया ना, और नहीं, तेरे नहीं। अवेंजर्स वाले दोस्तों को नहीं, वो तूने अवेंजर्स को दिखाया ना, वो जो अभी तूने मेरे को दिखाया। रिलैक्स, वो आपके वाले एविडेंस नहीं है, रिलैक्स। वो नहीं, मेरी नहीं, उनसे बहुत रेयरली। नहीं, हाँ जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरे कोई भी अवेंजर्स रहने दे, कोई भी मैसेज पे रहने दे, तूने उनको स्क्रीनशॉट भेजा ना वो मैसेज का? नहीं, वो स्क्रीनशॉट नहीं है, वो प्रॉपर वो चीज है, नोटिफिकेशन है मैसेज पर जो आप शेयर करते हो इंस्टाग्राम की। यस, वो इंस्टाग्राम आपको भेजता है वो मैसेज भेजा। हाँ तो वो मैसेज काम करो, तूने स्क्रीनशॉट लिया वो मैसेज का? मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको मैंने अभी तो दिखा, मेरे को दिखा, कितने बजे आया तेरे को दिखा? सही। मैं आपको एक प्रोटोकॉल समझाता हूँ। आप अभी एक रिमिक्स बनाओ, मेरे ऊपर बनाओ, मैं वो डिलीट करता हूँ, आप वो किसी को सेंड करना। तो जब आप किसी को सेंड करोगे तो वो डिलीटेड आएगा बाय मी, डिलीटेड बाय द ओनर ऑफ द वीडियो, राइट? तो हम ये कैसे मान ले Okay. कि ये जो लिंक तू शेयर कर रहा है वो हाँ। तेजस की रील का है, किसी और रील का नहीं? बिकॉज 317 पर मैंने एक ही रील बनाया था, यू नो दैट, दैट्स व्हाट आई एम बाबा सेइंग। देख, हाँ, तू 317 पे रील बना, कभी भी बना, वो रील तेजस ने डिलीट नहीं करवाई है, वो तूने डिलीट किया, और मैं तेरे को बताता हूँ तूने क्यों डिलीट किया। वो तूने इसलिए डिलीट किया है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे वो हो, तो बिकॉज इधर दो रील डली है, दो रील डली है इधर। एक रील डली, वो तूने डिलीट की, फिर दूसरी रील तूने अगले दिन पोस्ट की, और वो तूने इसलिए पोस्ट की। वाई? मैं बताता हूँ ना वाई, मैं बताता हूँ ना वाई। मैं आपको लाइव ले लेता हूँ एक इंसान को जिसने रात में वो वीडियो देखी थी, एंड आई थिंक वो आपके ही स्टूडेंट है। वो मैंने भी देखी है, वो तेजस ने भी देखी है, और हमको पता है वो वीडियो तूने क्यों डिलीट की। नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं लाइव ले लूंगा। आपको प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दिखा। अरे बाबा, अरे भाई, तू ढक्कन है क्या? सुन, मैंने बोला वो वीडियो मैंने भी देखी है। सुन ना, बताओ भाई, देख, रिमिक्स तू बनाता है, हम नहीं बनाते रिमिक्स।
तू पता है क्यों बनाता है बताओ। रिमिक्स? तू तेजस पे बनाता है, एकांश पे बनाता है, अभी वो फूड फार्मर पे बना रहा है, तू क्लाउड के लिए कर रहा है। अपन जब आते हैं ना, लाइव आते हैं, Okay, so लाइव आते every हैं, person in this room, लाइव every आते, person in this room are content creators. So you are saying कि content creation एक बेकार चीज है? अरे बाबा तेरे को हिंदी नहीं आती है क्या? मैंने क्या आपको बोला तू आती है? क्लाउड के लिए कर रहा है? क्या? मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये आप नहीं किस बोला चीज कि के लिए कंटेंट कर रहे हो? क्रिएशन बेकार आप है। किस चीज के लिए कर अभी रहे हो? बायोलिंक, मैं आप अभी किस चीज के लिए करते हो? सुन क्लाउड के लिए सुन नहीं सुन करते? सुन 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 टेल मी, सुन क्लाउड के लिए नहीं करते सुन डिबेट? मेरी बात। मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात नहीं की, मैंने बोला कि तू आई ये एम नॉट जो अवॉइडिंग द नौटंकी कर रहा है ना, वो क्लाउड के लिए मिस्टर कर रहा है, अमन दुग्गल ठीक इज है? नॉट डूइंग द डिबेट ऑन सोए राइट नाउ, ही इज मैं डिगिंग द सौ पे कर रहा हूँ पास्ट। डिबेट, करो ना, मैं करो। मैं 100 पे कर रहा करो हूँ, भाई। और ये 100 पे ही तूने रील बनाई है, और मैंने हाँ। तो दिखाया है यहाँ पे तो कि ना तेजस ने वो रील स्टार्ट डिलीट करो। की, ना तेरे पास कोई एविडेंस है जो दिखाता है कि तेजस ने वो रील डिलीट करवाई, जो और ना ही तेरे पास जो कोई रिमिक्स एविडेंस करता है जो है, दिखाता रिमिक्स है, करता है उसको जो पता दिखाता है। आप रिमिक्स नहीं करते, आपको नहीं पता ओनर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उस पर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम तूने सेइंग। तूने दिखाया है क्या कि कहीं पे भी वो मैसेज में कहीं पे भी लिंक है क्या कि तेजस ने डिलीट करवाई? या ये भी दिखा नहीं सकते होता, है तू मेरे को? इंस्टाग्राम ये आपको अगर नहीं तूने मेरे को बताएगा। ये भी दिखा दिया, क्या? अगर तूने मेरे को ये भी दिखा दिया कि वो जो मैसेज तेरे को आया है इट वॉज एसोसिएटेड विद योर रील, तूने वो भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, मेरी रील तूने है एक भाई बस वो। फालतू सा मैसेज। Okay. कैसे वो तेरे मैसेज से ये भी नहीं पता चल रहा कि वो तेरी रील है? वो देख, किसी की भी रील हो सकती तो है, अब किसी का भी मैसेज इंस्टाग्राम हो जब सकता है। डिलीट करता है तो वो मुझे ये नहीं बताएगा मैं आपकी रील प्यार से डिलीट कर रहा हूँ। आर यू मैड और व्हाट? तो जब रिमिक्स नहीं बना तेरे पास एविडेंस ये नहीं मेरा है, फॉल्ट जब नहीं तेरे है, ये मेरा फॉल्ट नहीं तेरे है। पास आपको जब है, remix बनाना नहीं आता, तो आपको तू Instagram चलाना नहीं तो आता। तू क्या This is बोल not रहा my है? fault. This सुन is मेरी not my बात, fault. सुन मेरी बात। You तो should- फिर you तू should तू know तू that अज्यूम, remix कैसे काम तू करता है। जब आप एक्सपेक्ट करता Instagram है, पे हो, देख बोलो। देख तू एक्सपेक्ट करता है फिर कि हम बस विश्वास करें कि तेजस ने रील डिलीट की, तेरे पास कोई एविडेंस नहीं, और अब हम ऐसी ऐसी विश्वास करें? 10 लोगों ने देखा है, आपके काफी स्टूडेंट्स ने देखा है, अरे और वो लाइव, मैंने आज वो देखा लाइव भी है, है। अरे ये बाबा देखा है ना? मैंने देखा अरे, है, मैं तेरे को अभी वो तेरी रिकॉर्डिंग दिखा भी सकता हूँ, और मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि तूने वो रील क्यों डिलीट करवाई। वो तूने बताओ ना, डिलीट कराई है, बताओ। तेरे पास मैं कोई सेम एविडेंस रील बोल नहीं रहा है। हूँ। ठीक है, आप करो, सिर्फ लाइव स्टार्ट कर। करो। मैं तो कह रहा हूँ सोए पे करो। तो एक काम कर, हाँ हाँ, वो सेम रील अपलोड करेगा इसके बाद, आप मुझे करेगा भेजो, सेम मैं रील कर देता हूँ। अपलोड? हाँ, मेरे पास नहीं है तेरे वो। पास नहीं है? भेजो आप। अच्छा रिमिक्स अगर रिमिक्स सेव मैंने, नहीं होता, रिमिक्स सेव नहीं होता मेरे पास, मैं आपको बता दूं ये चीज। अच्छा सुन, हम्म। मैंने अगर तेरे को वीडियो भेजा तो अपलोड करेगा फिर से? सी द थिंग इज, मेरा तेजस का डिबेट हो चुका है, एंड आप बोलो तो मैं लाइव चला दूंगा ये, आप लाइव चला दो। नहीं, तूने अभी क्या बोला? तूने बोला ना अरे कि मैं अगर पागल तेरे हूँ को क्या वीडियो भाई? भेजूंगा पुरानी तो चीज अपलोड मैं करो। अभी क्यों करूंगा? मैं पुरानी चीज अभी क्यों तू नहीं करूंगा? बोला अभी, तू नहीं बोला अभी कि तू अपलोड करेगा? क्यों करूं अभी मैं? तूने 2 मिनट पहले नहीं बोला, क्योंकि तूने चलो मैं बोला कर कि दूंगा, आप मेरे को कर वीडियो दूंगा, भेज दो, मैं अपलोड। कर दूंगा मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि मैं उसको करूं क्यों, एक रीजन तो दो। मुझे कोई इशू नहीं है करने के लिए। मैं बताता हूँ, सुनेगा रीजन? बोलो। मैं तेरे को रीजन देता हूँ, मेरे को रील क्यों चाहिए वापस तेरे प्रोफाइल नहीं, मैंने ये मेरे को। भावेश अरे के साथ सुनना, बात की थी। अबे बोलो, सुनना बोलो, भाई, तेरे को सुनना है तो सुनना। बोलो बोलो। इंटरप्ट क्यों करता है तू? चलो। जज्बाती क्यों होता है? आप भी जज्बाती हो जाते हो कभी कभी, नहीं? चलो स्टार्ट करो, बोलो। तो मैं तेरे को रील इसलिए भेज रहा हूँ, और जैसे तूने अभी बोला, तू प्रॉमिस कर रहा है कि तू वो रील वापस अपलोड करेगा, क्योंकि उसमें जो तेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स है हाँ, वो बहुत that's what I- इंपॉर्टेंट है। That's what I- ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने इसलिए री-अपलोड नहीं नहीं करा। नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लिसन Okay, लिसन, okay. तू बोलता है ना लिसन लिसन, अभी पूरी बात सुन लेना फिर रिस्पॉन्ड कर। देखो डिबेट करना है ना तो थोड़ा प्रैक्टिस कर। अरे नहीं, जब 5 सामने वाला मिनट में बोलता बात है खत्म उसको करो बोलने यार, दे, मेरे पास इतना time ही उसको नहीं है उसको आपकी तरह। जब सामने वाला बात करता है उसको बोलने दे, फिर तेरे ठीक है, को तेरे को चलो, मौका बोलो। मिलेगा ना। सीधा मैं तेरे को सीधा दूंगा, आप मैं तेरे को बोलो पूरा कि मौका, मैं री-अपलोड कर मैं दूं, तेरे मैं कर को दूंगा, बात खत्म। पूरा मौका दूंगा बात करने के लिए, ठीक है? तू दिल खोल के बात कर, ठीक पर है, पहले मेरे को तो मेरा पॉइंट रखने दे पहले। रखो रखो, बिल्कुल रखो, रखो, बोलो। रखने देगा? पूरा रखने देगा? हम्म, इंटरप्ट नहीं करेगा ना? बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। तो देख मेरे को चाहिए कि तू वो रील वापस अपलोड कर जो तूने अभी माना है कि तू वापस अपलोड करेगा, क्योंकि उसमें जो तेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे को चाहिए कि वो रील विद दो सेम चॉइस ऑफ वर्ड्स कम्स बैक ऑन, एंड टू कम टू
those choice of words. हाँ. Your choice of words there Okay. were, I want everyone, this stupid guy Tejas is spreading misinformation, and I want everyone to go and bash this guy. Correct. Those were your choice of words, right? That is why I want that reel back up. Now you've promised everyone that you're going to upload that reel again. So thank you very much. And now we can begin the debate. ओके हो गया. चलो अब स्टार्ट करते हैं. आप बताओ आपका क्या दुविधा है, कुछ मतलब सोए से रिलेटेड, राइट? आपके 3-4 स्टडीज है, ह्यूमन ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, आई डोंट नो और भी होंगे, प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर. चलो आप बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपका, क्या है बताओ. Okay. So I'll start with a little introduction Yeah. about my case against soy. And I expect you to listen like a good boy and not interrupt me while I make my introduction. Sure. Do I have your word? Good. So, ये कोई नई बात नहीं है. 1 साल पहले मेरी डिबेट हुई थी चिराग बरजात्या के साथ, जब उन्होंने ये चैलेंज इशू किया था कि जो भी लाइव आके डिबेट में दिखा सकता है कि सोया चंक्स आर नॉट सेफ टू कंज्यूम, उसको मैं 31,000 रुपीज इनाम दूंगा. हमने आर्ग्यूमेंट्स रखी. वो आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये दिखाया कि फ्रॉम अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव there are many anti-nutrients present in soy, like lectins, saponins, goitrogens, oxalate, phytoestrogens, and so on, which do not make soy safe to consume from a theoretical standpoint. But I didn't just stop at theory. I also shared empirical evidence which highlights the fact that that theory actually translates into practice. For example, Ishizuki 91, which clearly shows one of the finest RCTs we have on soy and thyroid health, which clearly shows that even when you consume soy in small amounts, it can cause disruptions in thyroid function. Most of the participants developed hypothyroidism. A lot of them developed goiters. And after they stopped consuming soy, all those side effects went away. Likewise, I also showed other data which indicates that when you consume soy, testosterone function, reproductive function gets affected. Some of the literature which I highlighted in my last post was about soy and its negative effects on testosterone health. So we've got Kramer 2013. We've got the Gooden trial, which was brought up. Obviously, Volek didn't really test for testosterone, but Volek did show that compared to whey protein, soy does terribly as far as inducing muscle growth is concerned, and the carbohydrate group actually does better. And along with that, we've got other data as well, which indicates that soy isn't suitable for human health. In my debate with Chirag, I also brought up soy infant formulas and why that's an absolute calamity. It's incredibly sad that we have soy infant formulas when they wreak absolute havoc on the reproductive health of young infants. And I believe I linked to a review by Jefferson, if I'm not mistaken, which showed that infants who are fed soy formulas, they have estrogen levels far greater than lactating women, and even greater than women who are ovulating. Not just greater, a lot greater. Study. Wait, not a case study, my friend, it's a review. Okay. The case studies were not on infants. The case studies were the gynecomastia and erectile dysfunction case studies. Yeah. We got plenty in that regard also. Yeah. But yes, since you brought up the case studies, I shared those also. Not the strongest I think pieces you have of shared all. You literature. have shared all. Yes. I think two Yes, rare yes, I cases. have. Yeah. So, all in all, I've shared reviews, I've shared randomized control trials, I've shared case studies, I've highlighted the theoretical problems with soy. I've made a fantastic case for not consuming soy. And so far, I've just heard crickets from all of you. So, what do you have? Okay. Have you told everything? मतलब जो भी था अभी तक? It's all clear, right? Audience को समझ में आ गया Not क्या ev- बता रहे हैं बात?
No, Yeah, no, not the everything, basic but introduction. I can't do Yeah, that, right? You won't yeah, be able to keep up yeah, if I share everything. yeah. तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, राइट? तो अभी आपने कल आई थिंक मुझे लाइव बुलाया था। मुझे पता नहीं चला, आपने टैग भी नहीं करा था, मैसेज भी नहीं करा था, वरना कल ही ज्वाइन कर लेते। नाउ आपके ही लाइव में जैसा कि मेरी तेजस से बात हुई और आप छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड कर रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टू अपलोड द फुल डिबेट विद तेजस। मेरे पास अगेन वो रिकॉर्डिंग नहीं यार, स्टोरेज प्रॉब्लम आईफोन का थोड़ा रहता है, राइट? तो you should upload the whole live debate with Tejas on your YouTube channel, जो भी है। Instagram पे Tejas will करना, Instagram पे upload करना। it. Okay, sure. Tejas will upload the full debate. Now my जिधर मैंने बात करा था, जिधर आपको लगा मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज एंड somehow मैंने अपने एविडेंसेस भी नहीं दिखाए थे ऑन लाइव बिकॉज आई न्यू दिस थिंग विल हैपन, राइट? नाउ द होल पॉइंट इज, आपने कल लाइव पे क्या बोला, राइट? आपने कल लाइव पे क्या बोला, उसको प्लीज 1-2 मिनट में आप क्लैरिफाई कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम। मैंने लाइव में काफी सारी चीजें क्लैरिफाई की। आपने मुझसे मैंने रिगार्डिंग ये बोला था। सुनो 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 सुनो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आपको चाहिए ना समरी, चाहिए ना कल के लाइव की, ठीक है? जो मैंने पॉइंट ऑफ सबसे व्यू पहले उठाए थे, जो पॉइंट उठाए थे मैंने, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बोलो। द पॉइंट इज, जो आपने लाइव में मेरे रिगार्डिंग बात करा था वो चीजें बताइए। मैं बताता हूँ ना, तो सुनेगा तो बताऊंगा ना। ओके। तूने रील्स बनाई है, 3 रील्स बनाई है, तूने बनाई है, तो तेरे ही क्रिटिसिज्म्स है वो लेक 2013 के अगेंस्ट। तेरी लास्ट रील चल पकड़ लेते हैं, ठीक है? छोटी बात, पूरा समराइज करूंगा तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कीप अप। तो लास्ट रील तेरी पकड़ते चलो हैं, मैं सब लास्ट रील पकड़ते हैं ना तेरे बारे में। नहीं नहीं, चलो, सुन सुन सुन, बोलो बोलो, कर रहा हो ना, हाँ बोलो। कर रहा हो ना, इसलिए मैं तेरे को स्टार्टिंग में पूछा, तो इतना जज्बाती क्यों होता है? करना डिबेट, आराम से करना, प्यार से करना। जज्बाती मतलब समझाना एक बार। मैं तेरे को सिंपल चीज बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट रख रहा हूँ, तो सुनना, तू सुनेगा, ओके। तू सुनेगा तो फिर तेरे को पॉइंट मिलेगा ना, ठीक है? क्यों घुमा रहा है जज्बाती का मतलब? ये सब क्या, इसका क्या क्या रेलेवेंस? मुझे लग कुछ रेलेवेंस नहीं नहीं। रहा आपको पता। तेरी लास्ट रील लेते हैं, चल सिंपल पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है? तूने अपनी लास्ट रील में क्या बोला कि जो वोलिक है, जेफ वोलिक है, उसका लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, कीटोजेनिक बायस है, और इसलिए हम वोलिक को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके। तो तेरा लॉजिक मान लेते हैं, मेरे को भी मालूम है जेफ वोलिक का लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले सुखप्रीत सिंह के सामने और तेजस के सामने ये बात रखी थी कि जेफ वोलिक का लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, और क्योंकि उसका लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, जो ये स्ट्रेंथ है स्टडी की वो और बढ़ जाती है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हिज लो कार्बोहाइड्रेट बायस, द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप स्टिल डिड बेटर देन द सोय ग्रुप। राइट राइट। तो जब तू बोलता है कि उसका लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, तेरे को उसका लॉजिकल आउटकम नहीं दिख रहा है क्या? तू खुद के अगेंस्ट ही बोल रहा है, तू खुद के अगेंस्ट पॉइंट रख रहा है। ठीक है, तो चलो मैं एक बार दोबारा अपना समरी बता देता हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ तेजस के साथ लाइव में बोलूंगा, बिकॉज वो 3 वीडियोस जो है, 2 वीडियोस तेजस के लाइव के बाद बनी है, 1 वीडियो उनके लाइव से पहले बनी है ना, जिधर मैंने मैन और फीमेल का मुद्दा उठाया था, और लाइव पे हमारी बात हुई एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स की, जिधर आपने आई थिंक कल लाइव पर भी इस चीज को क्लैरिफाई करा कि रिलेटिव टर्म्स में मेंस एंड फीमेल्स का आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, समहाउ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, राइट? ये नहीं बोला मैंने। ओके, फिर मैं आप बोला रिलेटिव टर्म्स में विमेन का मसल गेन एंड स्ट्रेंथ गेन ज्यादा रहता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलमोस्ट सेम रहता है। रिलेटिव टर्म्स आप मसल ग्रोथ की बात करें, लाइक जो बोले की स्टडी में है हमारे 2-3 मसल मास का इंक्रीज होना, राइट? वोलिक की स्टडी में हमने ये पॉइंट हम नहीं लेके आए, हम रॉथ और हेगन की स्टडी की जब बात कर रहे थे, तब मैंने वो समझाने के लिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझाया लोगों को। ओके, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, वोलिक की स्टडी पर आते हैं, बिकॉज दैट्स द मेन क्रिटिसिज्म, राइट? मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपके कुछ और स्टडीज है जिन पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
तो वोलेक की स्टडी ये कहती है कि वे जो ग्रुप है, आई थिंक 9 मंथ्स चला है वो, राइट? तो आई एम नॉट श्योर 9 मंथ्स है 8 मंथ्स है, थोड़ा टाइम हो गया 9 मुझे months पड़े हुए। ओके, 9 मंथ्स है। तो वे ग्रुप में कंपैरेटिवली ज्यादा मसल ग्रोथ हुआ रिलेटिव टर्म्स में एज कंपेयर टू आपका फीमेल्स। इज दिस करेक्ट? वे को फीमेल्स के साथ कंपेयर नहीं नहीं किया नहीं, उन्होंने, नॉट फीमेल, वे को सोय के साथ सोय और कार्बोहाइड्रेट के साथ कंपेयर किया उन्होंने। तो रिलेटिव टर्म्स में मसल मास इंक्रीज हुआ, राइट? आप रखो ना अपना पॉइंट। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही है ना स्टडी में? कहीं गलत है आप तो? अपना पॉइंट पूरा रखो। मसल ग्रोथ हमने देखा है कि वे ग्रुप में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय द कार्बोहाइड्रेट Okay. ग्रुप, फॉलोड बाय द सोय ग्रुप। हाँ, तो वो एब्सोल्यूट टर्म में है, रिलेटिव टर्म में? आप मुझे वो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज एज यू नो आई एम नॉट दैट गुड इन फ्यू थिंग्स, राइट? मैं अभी उसको पढ़ना थोड़ा रिवाइज करना भूल गया हूँ। देखो, आई कांट रिकॉल इट। बात बहुत, आपने मेरे को क्या बोला? आपने बोला कि जो कल का लाइव सेशन है उसको समराइज करो। मैं आपसे हमने पूछ रहा हूँ, कहां रिलेटिव से, टर्म एब्सोल्यूट मैं बता रहा हूं ना। आपने हमारी बात कहां से शुरू हुई? हमारी बात शुरू हुई जेफ वोलिक के कीटोजेनिक और लो कार्बोहाइड्रेट बायस को लेके। आप अभी आगे हो रिलेटिव और एब्सोल्यूट को लेके। आपके मन में जो है, नहीं, आप स्टडी पे हो, पर जो ओरिजिनल मैंने क्रिटिसिज्म रखा था आपके रील का, वो तो आप भूल गए। आप पहले वो क्लियर करो बात। वो क्यों? नहीं, आपने थर्ड रील पर आ रहा हूँ मैं, थर्ड रील पर ही हूँ, आ रहा हूँ मैं, थर्ड रील पे हो ना, तो थर्ड रील पे ही रहो पहले। ठीक है, पहले थर्ड रील पे ये क्लियर करो मेरे लिए। ये मेरे लिए क्लियर करो कि जेफ वोलिक का जो लो कार्बोहाइड्रेट और कीटोजेनिक बायस है, वो आपके मुद्दे के लिए पॉइंट कैसा, आपके फेवर में पॉइंट कैसा है? क्योंकि वो जो आपने पॉइंट सामने रखा है, जो आर्ग्यूमेंट आपने सामने रखा है, वो हमारा केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपका नहीं। ओके, ठीक है, मैं आपके केस स्ट्रॉन्ग करवा दूं 2 मिनट में। द फर्स्ट थिंग इज, क्यों कीटोजेनिक बायस, क्यों इंडस्ट्री बायस मैंने बोला इधर? बिकॉज कीटोजेनिक डाइट्स, वेगन डाइट्स, दीज कार्निवोर डाइट्स, मेडिटेरेनियन डाइट्स, जो कि फॉरेन में काफी ज्यादा एक्सप्लोर हो रखा है, राइट? इधर कम्युनिटीज बन रखी है, और एक तरह से जो कीटोजेनिक डाइट्स को, स्पेशली एनिमल वर्सेस प्लांट जो चलता रहता है, राइट? दैट्स द मेन इशू। दिस इज That is not the main issue. The main issue here is soy. इंडस्ट्री बायस नहीं आएगा। अरे मेरे भाई, अगर इंडस्ट्री बायस आ रहा भी है, तो इंडस्ट्री बायस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को बुरा दिखाने की कोशिश करेगा। करेक्ट? पर कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं दिख रहा है, ये स्टडी में कार्बोहाइड्रेट अच्छा दिख रहा है। ओके, तो तू जो लॉजिक, मैंने एक स्टडी पे कंक्लूड नहीं किया है, मैंने बहुत सारे स्टडी दिखाए हैं, तू एक स्टडी पे अटका है। क्योंकि वोलेक साहब ने तो बताया हमें दूसरी स्टडी में कि कार्बोहाइड्रेट्स खाना गलत है, वो तो ये चीज बोल सकते हैं ना? ठीक है ना, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट तूने निकाला है। अगर वोलिक साहब बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाना गलत है, और तू बोलता है कि उसका लो कार्बोहाइड्रेट बायस ये स्टडी में भी आ रहा है, और उसके बावजूद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप सोय से अच्छा करता है, तो फिर किसका मुद्दा ज्यादा स्ट्रांग बनता है, मेरा कि तेरा? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं स्टडी पर आना चाहता हूं पहले, बिकॉज स्टडी को हम जब लाइन वाइज ब्रेक डाउन करेंगे तब इस पे ही मैं तेरे को बताता हूँ, मैं ये मुद्दा क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ये मुद्दा इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कंसीड, बी ऑनरेबल एंड कंसीड। First concede that you lied about Tejas. Then concede that your stupid low carbohydrate logic shoots you in the foot. You successfully made an argument against you. You are making an argument for me, क्योंकि ये argument मैंने already highlight किया है Tejas के साथ। I know. आपने ये वेगन पर भी बोला है कि मार्क मसीना का इंडस्ट्री बायस आया, तब आपके इंडस्ट्री बायस नहीं आते, आपने ये बात बोली है। क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री बायस मेरे आर्ग्यूमेंट के साथ लिंक है, और वो इंडस्ट्री बायस मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। ये जो इंडस्ट्री बायस तू लेके आ रहा है ना, वो मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, तेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाता है, तेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाता है। देख, लेटर टू द एडिटर की ये बड़ी बड़ी बातें मत कर, कोई भी लिख सकता है लेटर टू द एडिटर।
ठीक है, क्या लिखा? अच्छा बता, क्या लिखा तूने? क्या लिखा लेटर टू द एडिटर? कैन यू लिसन मी फर्स्ट? मैंने बोला मार्क मसीना पर लेटर टू द एडिटर गया है कि उनका इंडस्ट्री बायस है, एंड आई एग्री विद दिस बिकॉज आई हैव दैट थिंग। द थिंग इज, जो कि उनका आई थिंक परसों ही एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बोला है खुद कि हो सकता है मेरे पर क्लेम्स हो और होना भी चाहिए। ही इज सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज फार एज आई नो, राइट? इन अ सोए इंस्टीट्यूट एज फार एज Come back to Oleg. This is not about Messina. I want you to concede that you shot yourself in the foot when you appeal to that low carbohydrate logic, which goes against your claims. क्या मैंने गलत क्या बोला? Accept it. कीटोजेनिक डाइट गलत नहीं है क्या? मैंने गलत नहीं बोला क्या? उधर बायस नहीं आएंगे? और चलो, कोई भी साइंटिस्ट बोल सकता है। आपके लिए मैं आपके साथ एक कीटोजेनिक डाइट पे भी डिबेट रखता हूं। मैं बोलता हूं कीटोजेनिक डाइट ठीक है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये कीटोजेनिक डाइट के बारे में नहीं है। बात बहुत सिंपल है। तो आप तेरा जो रील है, अरे आप एक रील पे अटक गए, मैंने 3 बनाए, आप लाइन नहीं, ना। और मैंने क्यों बोला? तूने मेरे को क्या बोला? मैंने क्यों बोला? बिकॉज तेजस टोल्ड मी ऑन लाइव कि क्या आप बैकग्राउंड चेक करते हो? मैंने बोला नहीं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द थिंग इज आपने गुरुमान तक पे वीडियो बनाई है, ये बोला। और तेजस ने क्यों बोला कि आप बैकग्राउंड चेक करते हो? ताकि आपको ये दिखाए कि उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया है, उनको पता है कि जेफ वोलेक का लो कार्बोहाइड्रेट बायस है, एंड इफ एनीथिंग दैट लो कार्बोहाइड्रेट बायस स्ट्रेंथेंस आवर आर्गुमेंट अगेंस्ट सोय। पे नहीं है, मैं सोय पर हूँ भाई, मैं सोय प्रोटीन पर हूँ, आप कार्बोहाइड्रेट पर जा रहे हो। आई मेड अ वीडियो, मैं तेरे को जो तेजस ने रिकमेंड करा मुझे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने लाइव तो छोटी छोटी कर दी, आधी आधी अपलोड, पूरी अपलोड करो ना, लेट द वर्ल्ड नो दिस थिंग। तेजस ने क्या हुआ लाइव पर? तेजस ने जब वोलेक का बायस तेजस लेके आया ना, तू नहीं लेके आया, तो इसका मतलब जब तेजस लेके आया था अपना जेफ वोलेक का लो कार्बोहाइड्रेट बायस, उसका कीटोजेनिक बायस, वो तेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जेफ वोलेक के लो कार्बोहाइड्रेट बायस के बावजूद ये स्टडी में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ने सोय से अच्छा किया, इन स्पाइट ऑफ कंज्यूमिंग लेस प्रोटीन। मैं सोय पर आता हूँ, सोय पर बात तो मैं इस कार्बोहाइड्रेट को सोय से ही कंपेयर कर रहे हैं ना वोलेक की स्टडी में। अभी तो अक्ल का दुश्मन है क्या? तेरे को अभी तक लॉजिक, तेरे को लॉजिक नहीं समझा क्या अभी तक? तेरे को खुद का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है क्या अभी तक? इसलिए मैं इतने प्यार से तेरे को इतने प्यार से समझा रहा हूँ, जो कि तेजस तेरे को इतने प्यार से। तेजस को तूने थैंक यू बोला और तूने कुल्हाड़ी ली और खुद के पैर पे मार दी। उसने आइडिया दिया, जो आइडिया है वो जो आइडिया है वो तेरे आर्ग्यूमेंट को डिफीट करता है, तेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जाता है वो आइडिया। आई सेड, क्योंकि मैंने उस वीडियो के बाद में भी तो बोला कि कीटोजेनिक डाइट अच्छा नहीं है, मैंने उस वीडियो में ये भी बोला। और हम कीटोजेनिक डाइट की बात कर ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं सोय की। बिकॉज द 4th वीडियो जो कि मैंने लीन बीस्ट पे बनाया था वो डिलीट हो गए लीन बीस्ट के थ्रू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई थिंक हिमांशु इज वन ऑफ योर स्टूडेंट जो कि लाइव है, ओके? और उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू में बनाया था। आपने ये हो रहा है कार्टून नेटवर्क। आप कार्टून नेटवर्क बना रहे हो यार, मैं तो सोए बनाना चाहता हूँ। सुन, मेरे को बस देखना था कि तू डिबेट में कितनी सच्चाई लेके आएगा। ओके, पहला पॉइंट मैंने पकड़ा तेजस का, उधर तूने झूठ बोला। दूसरा पॉइंट मैंने तेरे को बोला, मैं अपलोड कर दूंगा स्टेटस पे कि तेजस ने डिलीट करा, ओनर डिलीटेड द वीडियो, नॉट मी, ओके? ओनर कौन बोलता? कहाँ पे लिखा है कि वो जो रील का ओनर है वो तेजस है? वो वहां पे तो लिंक भी नहीं है कि तूने जो जिस रील पे, वो भी लिंक नहीं है, वो भी लिंक नहीं है, नहीं होता है ना? तो फिर हम तेरी बात क्यों माने? हम ठीक है, मैं क्यों माने? टॉपिक को वैसे भी छोड़ता हूँ यार, मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि तेजस ने डिलीट कर दिया तो अभी रोना चालू कर दो, नहीं। तूने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, तू पता है क्या करता है? मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ता हूँ? मैंने कब करा? मैं ये टॉपिक तूने जब तेजस पे रील बनाई थी, आई अर्ज तेजस नॉट टू डिलीट दिस रील अगेन, तो तू पता है क्या करता है? अपलोड करूंगा मैं, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके? वो तो तब भी करेगा ना जब मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा। तो मैं तेरे को जब भेजूंगा तो आज रात को वो वीडियो अपलोड कर लेना। आप लाइव दिखाओ ना यार, लाइव दिखा दो। नहीं, तूने बोला ना तू अपलोड करेगा, मैं भेजता हूँ ना तेरे को वीडियो, भेज, तेरा जीमेल भेज, मैं तेरे को। ओके, ठीक है। मैं ये दोनों मुद्दों पे इसलिए अटका हूं क्योंकि मैं बताता हूँ तेरा, नहीं सुन ना, सोए पर तो आओ।
ये सॉय पे ही बात कर रहे हैं हम, जो पहले दो पॉइंट जो हमने छेड़े हैं ओके वो हम सॉय पे ही है। तो सुन ना, तूने बोल लिया ना, और कुछ बोलना है तेरे को? नहीं यार, अभी तो आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। आप हाँ तो नहीं बोलना है ना, तो मैं फर्स्ट उस पे नहीं, आओ ना, फर्स्ट रील पर आओ। मैंने वो फर्स्ट रील तो तेरी डिलीट होगी ना तेरी, अरे वो फर्स्ट रील तो तूने डिलीट की। दोबारा रीअपलोड की मैं मैं ये पॉइंट मैंने ये पॉइंट को पकड़ा इसलिए है क्योंकि तू क्या करता है। यू कैन डू इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको हर चीज अरे नहीं दिख रही, आपको एक कमी हम पकड़नी है, उस पर रोते रहना है, दैट्स व्हाट ऑल यू कैन डू। अरे देख, हाँ। मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, ये इमोशनल अपील तूने हाईलाइट किया, ये झूठ तूने बोला, और मेरा काम है यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी करना। अच्छा, मैं बस ये दिखा रहा हूं कि तू सबसे पहले झूठ बोलता है, वो एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। दूसरी चीज जो मैंने दिखाई कि तू अक्कल का दुश्मन है, तेरे को सिंपल लॉजिक भी नहीं आता है। जब तेजस ने तेरे सामने पॉइंट रखा जेफ वोलिक के लो कार्बोहाइड्रेट बाइस का, वो उसने इसलिए पॉइंट रखा, बताया नहीं था उस टाइम, उन्होंने मुझे बताया नहीं है कि तू बोलने नहीं देता है ना। प्रॉब्लम तेरा ये है, तू तेजस को कंप्लीट करने नहीं देता है। वो जब पूरा वीडियो मिलेगा ना तेरे को, तब तेरे को दिखेगा कि जब भी तेजस एक अच्छा पॉइंट रखता है ना, तो शुरू हो जाता है, लिसन लिसन लेट मी स्पीक। अरे तो तू सुनेगा तो सीखेगा ना, इतना नहीं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर कुछ हेरा फेरी करोगे, पॉइंट को रखने ही नहीं दोगे, तो मैं क्या बोलूं? लिसन, और क्या बोलूं मैं? देख, तेरे रिलेटिव और एब्सोल्यूट पे भी आएंगे, ठीक है। तेरे को एक चीज दिखी है वो लिख में, मेरे को पता है, जिसपे तू अटका है और तेरे को आना है, उस पे भी हम आएंगे। मैं और भी चीजों पे आऊंगा, आपको क्या लगता है आई जस्ट शो माई ऑल कार्ड्स? कम ऑन मैन, आई एम नॉट दैट गाय। I'll tell you something. If you're a true scientist, you would show all your cards. नहीं, if you actually cared about the truth, I'll tell you something. Because I'll show all my cards. I know you. I'll tell you the difference between you and me. पकड़ के रोता है. I'll tell you the difference between you and me. I have shared data. You haven't shared data. I will show you. You only respond to the data which we share. I have all data. Come on, I will show you right now. So far, Prabhat. I will show you agree. The data right now. Have some honor. Have some honor. Have some class and agree. You have not shared any data. You have simply responded to the data that I have shared. What have you shared? That's what I do. What have you shared? आपने बोला, because आप ही ने बोला है कि we have enough data on soy that it is अगर safe and somehow मैं खुद चेरी पिक कर रहा हूँ। अगर मेरे भाई तेरे को सिक्योरिटी होती ना तेरे स्टैंस में और तेरे डेटा में, तू सारा डेटा सामने रख देता, मैं भी मेरा सारा डेटा सामने रख देता, और फिर हम देखते ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे क्या है, मकसद क्या है, ऑडियंस को ये मकसद क्या है। सुन बात पूरी सुन, बात सुन और फिर बोल, तेरे को टाइम मिलेगा रिस्पॉन्स। ठीक है। मकसद क्या है? चल तू भी ये बात पे अग्री करेगा। मकसद यही है ना कि कंज्यूमर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, वेदर सॉय इज सेफ टू कंज्यूम और नॉट। ठीक है, हमने पकड़ा है एक स्टांस, आपने पकड़ा है ऑपोजिट स्टांस। नाउ व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू? The responsible thing here would be that if you actually have a lot of literature in favor of soy, please share it. मैंने ये कल भी बोला है। अरे मेरे भाई पूरा सुन पूरी बात, ठीक है, सुन, ठीक है। जब तू सुन लेगा ना पूरी बात, उसके बाद तेरे को मौका मिलेगा, तो दिल खोल के अपनी बात शेयर कर सकता है। यार वही बात है, चीजों को फालतू चीजों में घुमा रहे हो। अरे यार तू रोता क्यों है? मैं अभी बात कर रहा हूं कि हमारा मकसद क्या है ये डिबेट करने का, ठीक है। ये फालतू चीज नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं एट द एंड मकसद है कि कंज्यूमर, मेरा मकसद उन सारे कोचेस पर है जो फूल है और एक गधे को गधे तरीके से फॉलो करते हैं, अन्य तरीके से फॉलो करते हैं। दैट्स माय मेन स्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम हियर। ओके, आर यू डन? नाउ यू कैन आई रिस्पॉन्ड? ओके, श्योर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर गोल एंड माय गोल। आपका गोल है, जैसे आपने बोला कि आपको ये दिखाना है कि वो जो कोचेस है वो गलत है और आप सही हो। मेरा ये गोल नहीं है। मेरा ये गोल, अरे सुन अभी तो सुन ना, अभी सुन। तूने बोला ना, अभी सुन, मैं बताता हूं मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि कंज्यूमर तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो मेरे पास जो डेटा है मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं। मैं ही डेटा शेयर कर रहा हूं, मैं ही आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहा हूं। मैं मेरी अथॉरिटी लाइन पे डाल रहा हूं तेरे साथ डिबेट करने के लिए। मैंने कितने डिबेट किए हैं और मैं ओपन हूं। तू ये 8वीं
बार आफ्टर वी अटेम्प्टेड टू सेट अप दिस डिबेट सो मेनी टाइम, 8वीं बार कुछ तेरे में जान आई और तू आया है. अगर तेरे को, if your intentions were pure, you would have debated me a long time ago, my friend. And your goal wouldn't be to pick on coaches. I have no reason to pick on coaches. I have no reason to pick on you. I actually legitimately want to convince you that there is sufficient data against consuming soy. And I am very open to seeing your data. I'm very open. If you can show your data, that would be great. Because if you show your data and if you truly convince both me and the audience, scientifically and logically, that it is safe to consume soy, we'll all consume soy. Yeah. तो आपका मकसद ये दिखाना कि वो coaches गलत है, they are all fools, one man versus the industry. What are you doing, man? Now, may I? Yeah. Yes, please. Okay. The thing is, why I'm saying this, कि लोग copy करते हैं content. Okay. That's my main thing to prove. Because एक बंदा, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट भावेश, राइट, उन्होंने आपकी चीजें शेयर की, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं करा. तो अब जब आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे, राइट, जब आप चीजों को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है. ठीक है, दैट्स माय मेन स्टैंस. जब आप किसी चीज को शेयर करते हो तो एटलीस्ट पढ़ो तो सही. अगर आप एक ट्रू कोच हो, लेट मी कंप्लीट, अगर आप एक सच्चे कोच हो तो आप एविडेंस रीड करोगे. ठीक है, मैं ये नहीं बोलता, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आप हर एविडेंस पढ़ो, बिकॉज टाइम लगता है. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस. आप 3-4 घंटे लगाओगे एक स्टडी को, क्या पता ज्यादा भी लग जाए. आई रियली डोंट नो अबाउट, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट. बट द थिंग इज, जब आप किसी स्टडी को शेयर कर रहे हो, जब किसी चीज को आप बोल रहे हो, तो क्या आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज है? क्या आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, rather देन किसी और बंदे के पास है, जहां से आप कॉपी कर रहे हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप? दिस माय होल. आपको कैसे पता कि भावेश ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया वो डेटा? बिकॉज मैंने उनसे जब बोला लाइव पे, आई थिंक उनके साथ मेरा लाइव हुआ था, यू नो दैट, राइट? आपने शेयर भी करा है वीडियो. तो उधर मैंने बोला, मैं बहुत सिंपल सवाल है मेरा, आपको कैसे पता कि भावेश ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया? मैंने उनको लाइव पे बोला कि आपने स्टडी रेफर की है, तो उन्होंने बोला कि आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया, या ऐसा कुछ लाइन बोला था, बिकॉज आज से 2 महीने पहले लाइव हुआ था. मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं पता, बट ही सेड कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये स्टडी भी रेफर की. कौन सी स्टडी की बात कर रहे हो? भावेश इधर है, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं. गोडिन. तो भावेश ने ये आपको बोला कि जब उन्होंने गुडिन की स्टडी शेयर की, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया डेटा. ये उन्होंने लाइव बोला आपको? हाँ जी, उन्होंने पढ़ा नहीं, क्रॉस वेरीफाई नहीं करा. दिस इज समथिंग सिमिलर. ओके, 2 मंथ्स पहले हुआ था, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर क्या लाइन था एग्जैक्ट, बट उनको ये स्टडी के बारे में नहीं पता था. दैट्स माय होल पॉइंट. देखो प्रभात, हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना. आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आपकी बात कैसे मानूं कि आपके पास तो है ना, भावेश ने ये बोला है. आपके पास है, मेरे पास कौन सी रिकॉर्डिंग नहीं है? कौन सी? आपने शेयर करा भावेश का, आई थिंक रिकॉर्डिंग भावेश के साथ जो लाइव हुआ था वो शेयर करा आपने? वो एक क्लिप मेरे को मेरे फॉलोअर ने भेजी है. अच्छा, वो मैंने शेयर की है और उसके पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग. आई थिंक फिर भावेश के पास लाइव होगा, और बिल्कुल ही इज वन ऑफ योर फ्रेंड एंड सपोर्टर रिगार्डिंग दिस. नीचे सब लास्ट कमेंट देख लो भावेश का, व्हेन डिड आई से दिस भाई. ओके, तो आप बिल्कुल इसको लाइव कर दो, मेरे उसको लाइव को जो आपके साथ हुआ था, एंड पीपल विल न्यू इट. आप कर दो. वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो क्लिप मेरे पास है मैंने अपलोड कर दिया. सोई के साथ आपका, भावेश के साथ मेरा वाला नहीं है. मैंने अपलोड किया, मैं अभी दिखाता हूँ. एक क्लिप अपलोड किया आपने बस. मेरे पास जो क्लिप है मैंने वो अपलोड किया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको. और उसमें भी वो मैंने क्लिप इसलिए अपलोड किया है क्योंकि उसमें आप बता रहे हो कि इशिजुकी में आयोडीन कम दिया था, जो झूठ है. क्लिप्स अपलोड कर. और कंट्रोल ग्रुप नहीं थी, वो भी झूठ है. ठीक है, ये क्लिप की बात कर रहे हो ना? इसका पूरा है आपके पास? आपने पूरा अपलोड करा? ओके, चलो देखते हैं कितना चलता है.
अभी पता है इसमें क्या है प्रभात? जी बताओ। इसमें पता है, आप भावेश को बोल रहे हो कि उन्होंने कुछ स्टडी क्रॉस वेरीफाई नहीं की, जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है। अभी जो भावेश मैंने की बात एविडेंस नहीं। दिखाया नहीं, सुनो 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 सुनो, भावेश की बात, भावेश की क्लिप की बात कर रहे हैं। जो मैंने अभी एविडेंस दिखाया ना, जो मैंने क्लिप प्ले किया है, Right. उसमें पता है क्या दिखता है? क्या कि आपने एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, क्योंकि आपने बोला कि इशिजुकी में आयोडीन की मात्रा डिलिबरेटली कम कराई थी। आपने ज्यादा बोला थी। है और चिराग ने बोला है कि आपने बोला है और चिराग ने बोला है कि इशिजुकी में कंट्रोल ग्रुप नहीं था। Yes. आपने एविडेंस क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है। How? तो ये भावेश का जो अभी मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बहुत मजेदार डिबेट Okay. है। मजेदार डिबेट इसलिए है जी जरूर क्योंकि अभी मजेदार तक था। हम अभी तक हम सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे जी, हो। अभी आपने भावेश का टॉपिक निकाला, आपने बोला कि यार, भावेश क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है, सही, और सही, वीडियो में listen, क्या दिख रहा है कि listen. आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। क्यों नहीं करा? आपने इशिजुकी इश्यूज नहीं किया। आपने रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप था जब वो सीवीडी दिखा रहे थे कि उसमें इशिजुकी रिस्ट्रिक्शन है मिसो टोफू का। टेल मी। all participants were consuming seaweed and all participants got enough There is iodine. no restriction on seaweed. That's what I am saying. There is no restriction. आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे उस जापानी स्टडी को तब मिलेगा आपको। ओके? So if there is no restriction on seaweed, that means there is no restriction on iodine. That means Okay. everyone was getting enough iodine. You said कि deliberately lower करवाया गया iodine. Yes, आपने कुछ झूठ लोगों बोला है में और low आपने है, क्रॉस कुछ लोगों में वेरीफाई। हाई है। और मैंने ये एक रील भी वो लो बनाया क्यों on है? seaweed. वो लो इसलिए है, वो आयोडाइड लेवल्स लो है। वो आयोडाइड लेवल्स लो इसलिए है Okay. क्योंकि सॉय इंटरफियर्स विद आयोडीन अपटेक, इसलिए वो लो आया है। At how much? क्या इतना हो गया कि जो आपका TSH में दिक्कत आ रहा है वो इतना डिजास्टरसली चेंज हो गया? बिकॉज वी हैव एनफ एविडेंस कि TSH चेंज हो रहा है somehow. वो वही दिख रहा है हमको कि टीएसएच देखिए, चेंज हो रहा है। सिर्फ listen. टीएसएच पे बात नहीं रुकती है। किस पे आती है बात, द participants who are consuming soy, most of them got goiters, they were constipated, they were getting malus, they had diarrhea, they had so many problems. When they stopped consuming soy, all their symptoms went away. So अगर आप बोल रहे हो कि उनको आयोडीन की कमी डिलिबरेटली करवाई है, तो फिर उनके सिम्टम्स कैसे चले गए जब उनको सॉय देना बंद हो गया? Listen, now the first thing is we have enough evidence कि TSH जो है वो increase होता है but it is in the range. The first point, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, राइट? आपने मुझे प्रूव कर दिया होगा कि मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, चलो चलो उसका कोई नहीं, ठीक है? अब उसको वो मानते हो आप? हाँ, मैं वो मान लिया आपने। वेरी गुड। चलो फिर अपनी आज का डिबेट खत्म। आज का डिबेट खत्म। चलो, that's not all you can do. ठीक है, That's all you can do. That's all you can do. आज का डिबेट खत्म। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तेजस के बारे में झूठ That's all you बोला can तूने, do. पॉइंट नंबर That's all you can do. मैं बताता हूँ क्यों डिबेट That's खत्म all है you आज। can do. मेरा आप ट्रेनिंग बोलोगे सेशन है 10 क्योंकि अब बजे। मैं evidence पे 10 आने वाला बजे हूँ। मेरा अब मैं ट्रेनिंग आपके सेशन है, evidence पे आने ठीक वाला है? हूँ। That's all you can do. अभी अब तेजस के training बारे आ में गया आपका। झूठ बोला, ठीक है? क्या सर? ठीक है, तेजस के बारे में झूठ बोला, फिर अपने लो कार्बोहाइड्रेट लॉजिक का मजाक उड़ाया, फिर भावेश पे उंगली उठाता है, बोलता है कि भावेश ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। और जब क्लिप मैंने निकाला तो क्या दिखता है वो क्लिप में कि हमारे भाई साहब ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। आपको बताता हूं आज मेरा मकसद क्या था, सच सच बताता हूं। I didn't want to debate this fool. I waited 8 times to debate this clown. ये फालतू इंसान ने, ये इडियट ने मेरे को सुबह 7:30 बजे का टाइम दिया और आया नहीं। आपको लगता है कि मैं इसको डिबेट करूंगा? इसको 1 घंटे से ज्यादा टाइम दूंगा मेरा। 8 बार अटेम्प्ट बना है हमारे डिबेट का। फालतू फालतू रील बनाता है, तेजस के बारे में झूठ बोलता है। ऋषभ वर्मा को पूछता है कि कैन यू शो मी वन ह्यूमन एविडेंस व्हिच लोअर्स टेस्टोस्टेरोन। कितने सारे एविडेंस शेयर किए मैंने, कितने सारे पेपर शेयर किए, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे पोस्ट पे है, दिखाता हूं आपको, जाके देखो। ये पोस्ट
का कैप्शन पढ़ो, कैन यू शो मी वन ह्यूमन एविडेंस? Kramer, Gooden, Thorpe, Habito, 2 case studies, and much more. I haven't shared Dillingham. I haven't shared so much more. ऐसे लोगों के साथ मेरे को डिबेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनको तमीज नहीं है। चालू करते हैं इडियट बोलने से। इडियट कौन? इडियट तू है प्रभात, और तेरे 3 पॉइंट में तेरी इडियोटिक बिहेवियर मैंने दिखाया है। पहला पॉइंट झूठ तेजस के बारे में, दूसरे पॉइंट में लॉजिक किधर और तेरा पॉइंट किधर, और तीसरा पॉइंट जो तू भावेश के बारे में जो तूने झूठ बोला, वो भी क्लिप में मैंने दिखाया कि भावेश ने क्रॉस वेरीफाई किया, तूने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। कबीर, चिराग, चौकसी, this is where you learn biochemistry from. Thank me and be grateful.